Good afternoon. My name is Dr. Lukram Ingmochogomita. It's very long, but people call me Lukram, and I'm presently teaching as an assistant professor in Department of Zoology, Kirorimal College. And like I did my PhD, MPhil from Professor S.B. Goswami, and then I did my PhD under Professor Rina Chakrabarti. So I learned a lot of things from here. And then most of them are practical. Good thing about doing PhD here, it's very laborious, and then you need to do a lot of works. So that's why you can learn a lot. So now, with this skill development program, that is regarding the sustainable aquaculture, and like as you are coming here for the faculty development program, so it's to get uh, learn something, and then to again to teach to the our students. So like we are going to do the identification of live food organisms. Like live food, we call it as like zooplanktons as well as phytoplanktons. Both of them are known as plankton, as you all know. So now, for doing like sustainable aquaculture, we need things, okay, like fish food, water, and all the even the fish species. We need to look for making aquaculture sustainable, because for example nowadays people are shifting towards these like urban aquaculture systems. Why? Because the most of the environment outside now, rivers are becoming black, and then even lakes, they are also like is like a lot of pollutions are coming up. So to make sustainable, we have to look for certain like technologies which can be like which we can do at our own labs, or with very less minimum use of the like land resource. Okay, so let us start with this. So live food, why we need live food? Actually, live food, if you are growing a big fish, okay, then you don't need live food. But if you are like doing like from like larviculture, as well as if you are doing like breeding of the fishes. So when we talk about the aquarium fish keeping, like once you start keeping the fishes, they may breed. Okay, let us say you cultured the mollies, then sometimes guppy and all. So what they do, they like you bring them as an adult, suddenly they may give like babies. So that is the worry thing about us, ki, what I have to give them, which type of food I should give. So that is the one thing. And like that, when we do breeding of many other fishes, expensive fishes like rahu, katla, mirgala, then for example anabas and all. So the survivability of the larvae is very like good, like almost 90% and above when we feed the zooplanktons, because zooplanktons contain a lot of the essential amino acids, then fatty acids, and they are also very easily digestible, and then they don't have any side effect. For example, we put like some artificial diet in the aquarium, so if they don't eat, then that feed will pollute that water. But if you provide zooplanktons, there will be no pollution, nothing. So let us start. Actually, why it's not working? So like definition, as you know, like I don't need to explain you all, because so like it's live feed organism include all the plants, that is phytoplanktons, and then animals, zooplanktons, that are eaten up by the economically important fishes. And We did this one. I think we will mention some points. See, live feed means any organism. It is not restricted to zooplankton. It refers to any and all animals that are aquatic, which are eatable by fish. That is what we call as live feed. So, having a food which is living is what the definition of live feed is. Correct. yeah, so like as the fish or fish receives this organism in live condition, that's why it is live feed. Because if we are providing a like artificial food, they are not living. So, and the exciting thing about like fishes is
they love to eat something like moving ones because they are attracted towards the fish. That's how we caught the fishes in the big seas or pond by using the beats. So that's how they are interested. Sorry. Next is, so zooplankton. These are different types of zooplanktons, and as we are talking about the aquarium fishes, so they when these fish eat the zooplanktons, they get all the essential like nutrients, as well as one more important thing is they also get the color enhancing like components from these zooplanktons. And these are different zooplanktons, Delphinia, and then the rotifers, and also the Cerodelphinia. So, so now comes to the point ki why we have to feed live feeds to the fishes. Okay, so it's written here live feed contains the nutrients, that is essential one, lipid, protein, carbohydrates, vitamin, minerals, amino acids, fatty acids, and it's almost very complete food, and that's why it is called as living capsules of the nutritions. And now like, and then like I already told you that like why we need to feed to which particular group of the fishes. So the newly hatched larvae of the fish or shellfish, just after the yolk absorption, they start exogenous, means like endogenous and exogenous, as you I think know, because the fish like when they are egg, okay, they contains yolk. So in some fishes, most of the Indian fishes, you don't need to feed up to 3 days, because they will utilize the yolk sac, the energy which is given by the mother. But I was surprised when I was in Norway. So they were not feeding the Atlantic cod for 46 days. And then they used to keep in the dark place. Then I was surprised why you are doing like this. They said because of the huge amount of the yolk, they don't need to feed them till 46. So that those things, because in the sea, they suddenly coming out and looking for the food, that may be difficult. So like that, so this is required. So exogenous feeding, but they have very less uh, mouth size, okay, as larvae. Like they have very small mouth size, that is about 0.1 mm, and then they also have primitive digestive system, and also as the digestive system is very simple, they have low digestibility. So the larvae cannot feed on artificial supplemented feeds. So they require small size, easily digestible, nutrient rich live food as their diet. Now like everything is like mentioned here, that is the digestibility. For example, when the fish feed the rotifers, they are very sharp, like a gulab jamun type, that things is to them. Now next is, so as we have explained that phytoplanktons, that is zooplanktons, and sorry, types of phytoplankton. Sorry, I have phytoplankton, but phytoplanktons and zooplankton ho gaya. Then it's the plant and the animals, and then planktons, they are drifters, and they don't have the capacity for swimming against any water current. And then so zooplanktons and the other small freshwater, they eat the relation between zooplankton and phytoplankton is that zooplankton will eat the phytoplanktons, and then this zooplankton itself, they will become the food for the fishes. So again, it's all about the phytoplanktons, and the sizes ranges between 5 to 25 microns, and some of the common species of the phytoplanktons are given here. And then the main thing about the phytoplanktons is they have the pupa, and also DHA, EPA, and the that is AA, which are very essential for the larvae. As you know that many like human also start consuming the spirulina. That during the corona, many people start eating the spirulina because they enhances our immune system, and also it's very good for other like amino acids. And then
and free fatty acids. So a microalgae as larvae feed, that also stimulates the enzymatic synthesis, then onset of feeding in young larvae, and also act as water conditioner for the striping of nitrogenous substances. For example, algae is there when there is algae in the water during the daytime, there is rich amount of oxygen also. So such thing can be happen. Like microalgae is also used as an essential source for rearing all the species of marine bivalve mollusks, not only fish. These are also used for the mollusk, gastropods, and also the shrimp. Sorry. So these are few examples of the different phytoplanktons. Okay, this is a spirulina, and it's become out as a tablet. So these are all essential for the fish, fish as well as the zooplanktons. So now come to the life feeds of zooplankton. These are the different zooplanktons and which we are going to identify now. So zooplankton starting from rotifers. Okay, this is something like about rotifers. Rotifer का जो classes है, and then different three classes है, and then also rotifers, they are commonly called as the will animalcules बोलते हैं. उनकी sizes जो है ना, that is ranges from 50 to 110. That's why we when we do shift करते हैं, तो it will be getting like then 53 micron to 106 micron के अंदर मिलेगा. So and there are also some larger ones. They may be like found in like 100 to around 200 microns. Then there is a lot of huge different species, like nearly 2,500 species of rotifer hai. And then the most commonly they are known as the Brachynes करके बोलते हैं. So their most common जो species है, that is the Brachynes placidalis, and then rotundiformis है. Okay, and then now rotifers, they also have the composed of 50 to 60% protein है उनके पास. rotifer का एक फायदा है, very high amount of protein. They also have 13% of fats and 3.1% of the hufa, and which are very much essential for the growth and survival of the larvae. That's why we should feed these zooplanktons to the fishes larvae for their survivability, high survivals. So these are some rotifers which we have to identify now. These are different characteristics. Okay, and then this is the Placidalis, and then this one is the Brachynes rotundiformis. So now next zooplankton, that is the Cladocerans. Uska phylum, then subphylum, and then the order तक हमने दिया हुआ है, Crustacea. So Cladocerans are generally called as water flea. उसका size है 0.2 to 2 mm. Okay. Then two Cladocerans, जो ज़्यादातर हमने 2 लिखा है, but मोइना को छोड़ के उसमें है आपका डेफिनिया, सेरोडेफिनिया and मोइना. They are the important Cladocerans है. So इसके बाद डेफिनिया and the मोइना, this found in the freshwater ponds, उसका lakes में मिलेगा all over the world. And digestive enzymes, they consist of broad spectrum digestive enzymes such as protease, then peptides, amylase, lipase, and even the cellulose, which serve as an exogenous enzyme in the guts of the fish, prawn, and increase their digestibility. Because like when these fish eat the Daphnia, Cerodaphnia, and then the Moina, they are also getting the enzyme, so they are helping like digestion, in the digestion. So now they contain around 50 to 60% of protein as well as 20 to 30% of fats. So these are the different like species which we need to identify now. This is Daphnia, and this all, they are all different species of Daphnia. To know more about differentiation, so this is the Moina, which has like two caudal extensions, okay, spines, and this is a Daphnia, as you are here, you can see here. But this is Cerodaphnia. The Cerodaphnia,
we have to identify by looking into the cells. Okay, that is hexogenous. Yeah, hexagon. Yes, 661. So now again, so these are the moina. Like when you see in groups, there may be this red color. So these are the moina. Okay, and then this is the serodefinia, these hexagonal ones. You have to see, like by making higher magnifications, you can observe this hexagonal, then you can confirm. And there is no much tail, जो उसका extend spines है ना, नहीं है इसमें. And then now come to the copypods. The size is 2 mm to about 1 centimeter. It's like one of the largest compared to rest of the zooplanktons. उसका classification is here. Crustaceans है, arthropods में आता है. So they can be found in both the upper water as well as bottom of the ocean and the fresh water bodies as well as swamp. हर जगह में मिलता है. Like, but in white, in wild copypods, especially copypods naupuli are the natural prey for the virtual all fish larvae. जितना भी है naupuli को खाते हैं. Now copypods have the high levels of the hufas as well as rich in EPA and whatever mentioned. But protein content is around 52 to 57 and the lipid content is about 7 to 14. So that it also improved the survival, growth. Then also it is important for pigmentations in the fishes, because when we do like ornamental fishes, it totally depends on the color. Means your price of the fish will depend on the color of the fishes. So these are some of the copypods. These two have the antenna, one eye, then thorax, abdomen, and then they are very much beautiful. So these are the all copypods, and this is the nauculi, the larvae. These are very commonly available, but they run very fast like a jet. So now for observing under the microscope, we will be using the formalin so that their movement will be stopped. So like there is again, we again put this, that is infosoria, because this is another technique which is much more easier. And sometimes when you start an aquarium fishes आपके पास आया है and then you don't know what to feed, so this technique can be used. Okay, इसमें कुछ नहीं करना है. उसमें क्या होगा, you take a beaker and then put some vegetable, fresh vegetable waste उसको रखेंगे. तो in 1 or 2 days there will be paramecium type का जो है ना आ जाएगा. So that can be eaten by the fishes if nothing is available. So that is also a good protein source, food source है. तो इसके लिए है. So उसका phylum class है Ciliata में आता है. वो ऐसा ही बहुत सारा multiple जो है ना होगा. So now let us do the identification. Please take the zooplanktons from here and then take it in the beaker and then. Yeah, just 1 second before you introduce. I think we're missing out one more organism. That Okay. is your cypress, correct? I really did not know the species. So this cypress is the black one which the researchers Yes. have actually, a say. So they are nothing. They are also crustaceans. The common name is also known as sea shrimp. Alright? And it belongs to the order Ostracods. I think in aquaculture we try to avoid this organism because of the fact that it is indigestible. Because the carapace, not the body structure, right? The carapace, the exoskeleton is so thick that you hardly can digest them, right? So you'll have one here, median eye, and then you have your food, that is branchiopods inside, something like this. I think this is what you'll be looking for under your microscope. I think 4x and 10x should be more than enough for us to understand the CD organisms. I have here the one fixed with formalin, and these are the live ones.
If some of you would like to see the way they swim under a microscope, you can go for this one, or if not, you can go for that one, so that you can have a formalin. Formalin, normally 5%. There are two beakers beside a biocide, and you have your dropper. You can just come over and get it from here, right? That should be better, right? A few things. If you would like to gather lots of organisms in one swing, make a centrifugal force or centrifugal force. So what you find is this: that after 30 seconds, all the organisms will align towards the center. Right? Then just take a small one here. You can come and get more, right? Like you will see like this in the slides. No staining, nothing, just whole mouth straight away. This is rotifer. ये फिश है. ये फिशेस ने खाया हुआ है जू प्लैंक्टन्स. ये. This was taken during my PhD. No, I've added them. It's 5 हाँ दे देंगे. हाँ ये वीडियो कैमरा वाला माइक्रोस्कोप एक उधर उससे लिया था हमने. कैमरा था उसके अंदर. ये रोटीफर है. ऐसा ही आपको भी दिखेगा. ये नोकुलाई है. हाँ मैं दिखा रहा हूँ अभी. ये देखो फिशेस ने वो क्या क्लेडोसेरेंस खाया है और जिंदा है इंटेस्टाइन के अंदर भी. सो ये देखो ना. ये वाला जो है ना आपने हेक्सागोनल देखा ना. तो ऐसा देखा तो आपका सीरोडिफिनिया है. Yeah, if it's possible, you can make a small diagram by your side. Like I'm keeping here this one. हाँ दिखा है. आप आइडेंटिफाई करना कोशिश करो. Yeah, can you make a small note by your notebook? Okay, I'm coming. This is all. बिना स्टेन के Huh? to identify What's up? không menggambar stain nanti yang Yauni kay kami sangtak to no. Si camera je lokho ga capture moi tawringe. दिख रहा है. ये देखो कॉफी पॉट है कि नहीं देखो कॉफी पॉट है ना कहाँ पे येलो वाला. हाँ ये कहाँ है. क्या बात है हाँ कॉफी पॉट है यार इधर जो है. मुझे शर्म आ रहा है. वो तो डालना था.
अरे वाह, point. एक मिनट लो यार। हाँ दिखा दीजिए। यस वेरी गुड। यहाँ पे शिरोडिफिनिया, एक मिनट। यस शिरोडिफिनिया ही है, इसका व्यू जो है ना थोड़ा वो साइड से है, बट दिस इज शिरोडिफिनिया। हाँ कौन सा वाला है? डिप्लेक्स ओके। हाँ कॉपी कोड भी दिख रहा है आपको। नौकुलाई भी दिख रहा है छोटा वाला। बढ़िया बढ़िया। उसको फोटो ले लो मोबाइल में। Oh wow. सब कुछ आ गया इसमें डेफिनेटली दिखा ना ये फुल मार्क्स ये तो देखो. ये सर एक्चुअली हमारा कमाल नहीं हाँ actually sir when I was in Canada हाँ once I researched this type of zooplankton there हाँ। अरे क्या बात है, तुमने वो डाला है ना वो फॉर्मेलिन। तुम्हारा कुछ गलत है यार, माइक्रोस्कोप में लाइट पूरा कर रखा है। ये देख, ऐसा देखना चाहिए टीचर बन के। देख पागल है। अच्छा दिख रहा है. फिल्टर यूज किया है क्या क्या आपने सर? सर आप माइक्रोस्कोप यूज आपका करना ना नहीं आता है। आपने क्या यूज किया बताओ? ये कम में हमेशा जो है ना माइक्रोस्कोप में तुम ना ये लाइट जो है ना हाँ. कहाँ गायब कर गया। अबे यार गुरु का ये देख, ये मूव कर सकता है। Oh. एक ये हो गया, एक जो है ना might see a very small tiny एक नहीं, रुको रुको, एक और है। यहाँ ऐसे नहीं नहीं एक और है यार। अरे यार कहाँ से very small organism with 4 legs are the सर डायग्राम मुझे सर इसको 5 में 5 दे देना। हाँ मुझे देखो क्या मस्त मैंने किया है और मेरी तरफ से 5 रुपए लुक रहा है सर ये क्या है? ये पूछ रहे हैं, टीचर पूछ रहे हैं क्या है ये क्या है? हाँ आइडेंटिफाई करो। निकाल सकते हैं। बढ़िया हाँ ठीक है ठीक हाँ बिना दो से ओके दिस इज द पॉपी पॉट वन विद द वेरी लॉन्ग फास्ट स्विमिंग। इसमें नहीं है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैंने बुक किया है ना तुम्हारा, उसमें ही लगा रह गया था। नहीं कोई कोई सर ये दिस वन दिस इज पॉपी पॉट। हाँ ये दिस आर एग्स। हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ yeah this is the no fly नौपुलाई। larvae of copypot वाओ एक वाला भी है और एक दोनों है। वेरी गुड। कौन सा बोला किसकी क्या बोला साइक्लोन सर मैंने किया था, आप कर लो, इसको ठीक कर दो। ओके ओके ये लोगों ने करते हुए ना लगाओ, इसको बनाओ। हाँ वही एग्जैक्टली इस वगैरह को दिखा देना बाद में, है ना? एकदम प्योर हाँ guys you can get more sample you might get a different variety of यहाँ पे लेते रहो। इसी लेवल पे जाना थोड़ा सा डिफरेंट है बट वैसे हम लोग जा पा रहे हैं I think we should restrict ourselves to the genus. Species को छोड़ देना because कोई जरूरी नहीं है एक्चुअली। वी लाइक
कुछ मिल गया, that is okay ना for us. क्योंकि when you go to the species level, So like if you want to do research, तो वो तो कल्चर करके आप कर सकते हो, कितना ग्रोथ होता है, लाइफ साइकिल क्या है. just go back once, go back. मैं कर रहा हूँ. Guys, dear friends, you see, you can see two picture of that, right? This is what you're saying it as cyclomorphosis. Because this is the normal condition and the optimum, environment. This is what a Daphnia lokicephala would look like. This is in the harsh environmental condition, especially temperature. सर ये फ्लोटिंग के लिए है ना, ये जो भी करेगा फ्लोट करेगा ऊपर. Float है और this is for potato. Okay. Maybe for floating. So the body morpho will change. That's what we're saying. Environment. So that's the cyclomorphosis. And we come back to कैसा पता चलेगा? Okay. you can have more organisms. Yeah, please. इसमें ना हमने तो ये दिखा दिया, दिस इज अकॉर्डिंग टू our availability, but in the European condition mostly they don't use like this culture system. They use Artemia. You know Artemia? Yes. Artemia for very fast and very comfortable like fish culture. You can like do Artemia culture also. Artemia culture, huh? Yes. Yes. But they need to be cultured under the saline condition. सोल चाहिए उसके लिए, जो सी वाटर कंडीशन है उसमें करना पड़ता है. बट द गुड थिंग अबाउट द आर्टेमिया इज यू कैन बाय द सीड्स. उसका ना सीड्स आता है, सीड्स करके सीड आता है, तो आप खरीद लिया आपने, देन यू लाइक पुट ए दिस थिंग जार, उसमें रख दिया, बिकर टाइप का जो बड़ा वाला जार रख दिया, एंड देन सोल कंपोजिशन बना लिया, देन यू प्रोवाइड द एरिएशन दे दिया, एंड देन यू जस्ट पुट दोज सीड्स रख दिया. Then after 2 days they will hatch out, and that becomes the instant food. So that is mostly used for the breeding of expensive fishes, है ना? And then for the larvae culture also. सर ये जो सिर्फ वगैरह जो रहते हैं तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये प्रॉन कल्चर में क्या करते हैं कि पूरा जो कैरापेस टाइट होता है तो उसको थोड़ा सा कुक करके तब वो सेल करते हैं. हाँ. तो इसको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं साइंटिस्ट को कि इसका जो ऊपर का जो कवच है वो थोड़ा ढीला हो जाए ताकि फिश खा सके उसको. मेरे ख्याल से उसको क्रश कर सकता है, शायद बनाना चाहिए. तो मर जाएगा ना और वो तो लाइफ खाएगी. एक्चुअली ऐसा मतलब ये इसका मैंने देखा, अभी वीडियो ढूंढ रहा था. आई वाज लुकिंग हाउ लाइक दे एक्ट when they entered into the larvae's intestine. They come out like live, खा लिया और जिंदा निकल के आ रहा है. और instead of like not only that, they also kill the larvae by like breaking the rupturing the intestine. ये है. That's why we have to take care from these black ones. उसका आप कभी भी एक बार फोकस करो, उनकी क्लोज दिखता है. इन बिटवीन दोज, हाँ, वो सांप होने से फाड़ सकता है. एक्चुअली आपको पता होगा ना, दुनिया में बड़ा से बड़ा जो एनिमल है, कौन सा एनिमल है बताओ आप? वेल यही ऐसा जू प्लैंक्टन खा के जी रहा है. वो इतना बड़ा है, फिश नहीं खाते, लाइक दे आर ईटिंग दिस स्मॉल जू प्लैंक्टन. और एक चीज है, देयर इज वन मोर ब्यूटीफुल स्टोरी है. ठीक है, क्या हुआ उसमें, क्या हुआ कि लाइक one guy, he was lost in the sea with a small boat. He doesn't have any food, nothing. Okay, then he was lost for almost 3-4 months. Everybody think like he might have died, but when he was found, okay, he was much more heavier, with the heavier body, with lot of muscles and much healthier condition में he was found. So what he did during his like this lost times in the sea, उसने क्या किया? He used his cloth. He used to ship the water, sea water,
and collected the zooplanktons. And then he was having those zooplanktons. That's how he survived, and he was much more healthier. And then the thing is that I think you all know about the osmoregulation. He is not only getting the protein, amino acids, free fatty acids, he also gets the water from the body of that zooplanktons. Because if you drink sea water directly, then you may die. But he was also getting the normal water, which was like conserved, like during the osmoregulation का process में conserve करके रहता. This was a very good story. It's a real one. So, like zooplankton का फायदा है. It's not only about like the fishes. It's also about the human. So I will try to like show you some of the zooplanktons, okay, so that like when you observe under the microscope, you will be able to identify them. Okay, it's not about, as said by the Moses, it's not about like going into details about taxonomy and all. This some simply we have to like identify them. So live feed, it's very important for like sustainable aquaculture. First of all, for we if we want to produce large scale of the fishes, or maybe in terms of like ornamental fish culture, so we need to like make the fishes very much survival. Means we need to make them high survivability. Otherwise, there will be loss. So in the natural condition, as like you may be knowing that out of like, for example, 100, only like 5% or 2% survives. But when we do like with the cares, like in the nature, intensive nature, so we can increase the survivability of the fishes. So to make fish much more survival and they healthy, so at that time, as well as for culturing, okay, so we need the zooplanktons or phytoplanktons, as we call as live feeds. So you all are welcome here, and then let us start. This is the session 3, day 1, okay. And Moses also did PhD from here, and his PhD was like in the zooplankton itself. He should explain more in detail, but he will be like helping you in identification. So now, so let us start. So like definition, by definition, live feed means the organism that is found in the aquatic body, means the water. So all the living organisms which is in the like water, which cannot like swim in the sense, they do the drifting. So like and moreover, they are like highly important for the aquaculture. Now we are only talking about the zooplankton, but there is requirement of phytoplankton, because phytoplankton that is eaten by the zooplankton, and zooplankton that is eaten again by the fishes. So there is a food chain. So we have to know the culture of both the things. But for now we are focusing mainly on the zooplanktons and its identification. So like yes, Moses already mentioned that food that is should be in the living condition, okay. So now, like as we are dealing presently with the ornamental fishes, so we if we are able to provide zooplanktons, the live feed to the fishes, then fish will have many important like benefits for us. For example, when we provide zooplanktons, there will be increase in the coloration. Ornamental, when we talk about ornamental fishes, it's all about the beautifulness. So the color is good color. Coloration is provided by the zooplanktons. Next is when you provide a brooder, that is the like matured female or male, if you provide zooplanktons, their health will be good, the eggs quality that will also be good, and when you provide them, they will start breathing. Okay, that is good thing about the zooplankton, because zooplanktons contains lot of like essential foods.
they contains like protein, amino acids, lipids, and also other very much required mineral nutrients inside them. So these are some of the zooplanktons. And one more important thing about the zooplankton is they are a compact capsule type of food with a very small size. Okay, so and then when we do the larviculture, as the mouth size is very small, okay, so we need a food which is very small also. So that is the thing we need. Why we need live fit? So why live fit organisms? That is the question we can ask. So live fit organisms, they contains all the nutrients which are like protein, lipid, carbohydrates, vitamins, minerals, amino acids, fatty acids, and that's why it is called as a living capsules of the nutritions. Now, like as I told you, fish do the breathing, but जो उसका breathing होने के बाद babies आता है, they also need the zooplanktons, but which will be of maybe of smaller size, like rotifers. So the newly hatched larvae of the fish or shellfish, soon after the yolk absorption, start exogenous feeding. So I think like exogenous feeding, you may be knowing that, like in the eggs, okay, when they do hatch, they carry some yolks from the parents. Okay, that is the endogenous one. But after completing those, while like before getting the food, outside food, okay, so that means if they start feeding, then they will start using the exogenous ones. So endogenous means which is carried, the energy carried from the parents. So in the most of the fishes, in the tropical fishes, so the eggs जिसके पास yolk है ना, that can survive for 3-4 days with those indigenous ones. But they have to get some food which is very easily digestible with the highly nutritious one. तो वो आपको उस time पे if they get the zooplankton or the dry food, their survivability will be very high, like above 90s. Otherwise, in the natural condition, their survivability is very low, like around 5%. Okay, so exogenous feeding में like I will be talking about like some Indian major carp है, rohu, katla, mirgala. They have the endogenous like yolk for 3 days. After 3 days, you have to feed them. But in certain other fishes like Europe में मिलने वाला like Atlantic cod, that is called as Gadus marua. So they need to be fed after 46 days of hatching because they have a huge yolk indigenous food. So and then they are kept under the dark place, dark without the light, because they can survive up to 46 days without the food. For us, we have to start feeding after 3 days. So and also the larvae, they have the very less mouth size, very little mouth size, that is just about like how much? It is like 100 micron. And then for 100 microns, we have to provide them 50 microns or 60, 70 microns, which was found in between the 106 and 53 microns. So, and those zooplanktons will be like rotifers. So for the, sorry. Now next is like, then why they need such food? Because their digestive system is very primitive. Okay, and then also they have the low digestibility. So artificial feed, if you provide, they need like extra efforts, lot of enzymes, and you also know that the zooplanktons, they also have the enzymes. Okay, that is called as exogenous enzymes, like they have, because they have enzymes and they support in the digestive system of these fishes. So next is they required small size, easily digestible, nutrient-rich live feed as well as their diet. Therefore, they serve as a starter diet for early larvae stages of many fishes and prawn species because their high nutritive value and also the better digestibility. As you all know this now,
So we can divide the planktons into phytoplanktons and zooplankton, and these are the plants, and then which are animals. So what do you mean by planktons? Planktons, they are the drifters, and they don't have the no capacity to swim against any water current. उसको हम बोलते हैं planktons. Now we have to know what is the relation between the zooplankton and the phytoplankton. So like zooplankton, they eat the phytoplanktons, and then after that zooplankton, that is eaten by the fish. So that is a food chain system. So now phytoplanktons, we are not focusing much on phytoplanktons, but still we will try to see something like which type of phytoplanktons, like microalgae. The sizes ranges between 5 to 25 microns, and these are all common species. And then they contain, the good thing about the phytoplanktons, the algae, is they have pupa, they have DHA, they have the EPA, then they have the AA. So these are all essentials and very important for the larvae. Okay, now these like phytoplanktons, they are also the they also stimulate the enzymatic synthesis, onset feeding in young larvae, and also act as a water conditioner by stripping of the nitrogenous substances. You know that, like so when there is plant in an aquarium, why we grow plant in the aquarium is they take out the waste which is toxic. For example, if they utilize the ammonia, then you will have a ammonia free. So sometimes like algae वगैरह जो है ना, वो क्या करता है, they also use out those excess waste nutrients. Okay. Next is microalgae is used as an essential food source for rearing all the stages of marine bivalves. So if you like do aquaculture, then you want to culture the bivalves. जो bivalves वगैरह क्या था, जो pearl culture था, pearl culture जो pearls डालने वाला जो animals है, वो लोग क्या खाता है, they eat the phytoplanktons. Okay, then gastropods and also the larvae as well as the prawn का shrimp culture करना है, prawn eat the algae. So now moreover algae जो है ना हम लोग भी खाते हैं आजकल. Now we human also start consuming the algae. क्या है? Spirulina. That was eaten and one of the most highly sold algae in the during the corona COVID के time पे बहुत लोग ने खाया है spirulina. That enhances the immune system. So these are the some live feed phytoplanktons का अलग-अलग varieties है. So I was talking about the spirulina. ये सब इधर जो spirulina दिख रहा है. If you like nowadays people are using this as a tablets. Okay. So these are others diatoms है, अलग-अलग है, but these are just, and then these are also another phytoplanktons which you can use for culturing the bivalves and the mollusks as well as shrimp culture. Now come to the zooplanktons. So these type of zooplanktons you will be able to see under the microscope if you take the sample from here. So now you have to focus on these different zooplanktons. Okay. So first, in the zooplanktons, we will discuss about the rotifer, which was collected in between 53 and 106. Okay, वो वाला. तो उसका benefits क्या है? आप देख लीजिए यहाँ पे. These are three different classes. Rotifers or the phylum है. So now rotifers are commonly called as wheel animalcules. Okay, वो एक structure है अंदर घूमता रहता है. Like wheels organ की तरह. Size ranges from about 50 to 100 microns, or sometimes they also have larger ones, that is 100 to 200 microns hai. There are about 2,500 species of rotifer, and they are available in all the water bodies, fresh water, brackish water, then sea water also. And the main common species that like genus, that is Brachinus. Okay, it's one of the most important and known rotifers. So there are again some very much common like species, that is Brachinus plicatus and the Brachinus rotundiformis.
okay, which are most common ones, and they are used in the hatcheries around the world. So why we have to use rotifers? That is not only about the size, it's also depend on how nutritious they are. So they have like around 50 to 60% protein, 13% of like fats, and 3.1% of HUFA. Okay, that is very much essential for the growth and survival of the larvae. So these are few species. Rotifers, they look like very soft ones, okay? Like very soft, very small, and almost like whitish in color. So you will be able to know now. So these are things, like this is the up, you may see this one, okay? And then also these are some types, and here again these types. So you have to differentiate which one you found, and then you can like name them looking into these pictures. Now next is another type of the zooplankton, that is Cladocerans. उसका classification दिया हुआ है, arthropodas में आता है, crustaceans है, and then Cladocera है. So sizes देखो, they are more than 200 microns. Okay, so they are called as water flea, and the most common species they have, that is Delphinia, Cerodephinia, and the Moinas. These are the three main groups of the like species which comes under the Cladocerans. Now they are also available in all the water bodies, ponds, lakes, etc. So Cladocerans का भी like it is like that. So they consist broad spectrum. उसमें क्या है कि like we are providing as a food, but they also contains digestive enzyme. Okay, such as protease, peptidase, amylase, lipase, and even cellulose. Okay, they serve as exogenous enzymes in the gut of the fishes, prawn, and that increases the digestibility. बहुत अच्छा digestibility होता है. और एक चीज है, not only zooplankton, when you eat fish, that is also very digestible. Like for example, when you eat chicken or mutton, their digestibility comes around 48 to 68 में रहता है. But if you eat fish, it digests like around 96 to 98% digestibility होता है. Now, so like not only these, they also have very high protein, that is around 50 to 60% protein, and also fat is 20 to 30% fats है उसके पास. So these are the few. ये जो है ना, these ones, they are the Delphinia. So you will be observing under the microscope, and they are very commonly available in this condition. Okay, so these are another group which comes under Cladocerans. This is Moina. आपको ना एक चीज, you have to know three things. Okay, Moina, they have two spines. Yes, and then Delphinia, they have elongated body as well as only one spine, whereas in the Cerodephinia, you don't see a spine. But the character is you see a hexagonal structure, cell in the outer body जो है ना, hexagonal structure. If you focus in higher resolution or higher magnification, you will able to see very clearly hexagonal. So then you confirm that the particular species is Cerodephinia. Moina, Delphinia, and Cerodephinia. For today, like you will be mostly available these two in these cultures. Okay. So now Moina जो है ना, like it is like this. When in the winter season में ज़्यादातर होते हैं, and then they are reddish in color in groups. Okay. So these are two spines. This is how you have to remember. Okay. They look like Delphinia, but they have two spines. Huh? Yes, male and female you can identify. This is like male type, like it is female. Always with the X they are female, without the X they are male. So this is again Cerodephinia. Cerodephinia may be like good question. This can be male and this can be a female with the X. So you see the hexagonal structure,
by using these you can identify this as a Xerodephenia, but they will also, they don't have the spines, उसके पास नहीं है. So now another species of zooplankton, that is the copepods. Arthropods है, crustaceans है, Maxillopoda है. So sizes will be ranging between 2 mm to about 1 centimeter. They are much longer compared to other zooplanktons. So copepod can be found in both the upper waters and bottom of the oceans and freshwater bodies, as well as swamps, bogs, ponds, and the other wet habitats. So in the wild, copepods especially that is found as naupuli. Naupuli में form में मिलता है, and then they are the natural prey of many fish larvae. Okay, so copepods have high level of HUFA, that is, and the rich EPA and DHA. Okay, so they also contains protein between like 52 to 57%, and lipid is around 7 to 14. Actually, you also know that in the zooplanktons, these are available like HUFA and polyunsaturated fatty acids. This is available. But, and again, in the fish, you also get all these things, omega 3 मिलता है. Omega 3 जो है ना, that is very much like important for our health nowadays. It is oil, though they kick out the saturated fats out of our body. So doctors recommend omega 3 nowadays for the pregnant ladies, the conceived ladies होता है, उनको भी doctor देता है, because it work as a engine oil. For example, you have a bike, so you are running your bike because of petrol. But if you want to maintain the good condition of your bike, then you have to use the engine oil. So engine oil is the like it works like an engine oil, omega 3, and it's also help in case of human. The omega 3 not only kicking out the bad fats, that helps in maintaining our brain के health maintain करता है. That's why it's very used nowadays. Now they improve the survival, growth, normal pigmentations, and also reported fish rear with the early stages of copepods. Early stage वाला से copepod. Actually in Europe and all, जो marine condition और sea वाला जो water है, उसमें copepods का ज़्यादा use किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर like essential जो amino acids वगैरह बहुत अच्छा से मिलते हैं. Now pigmentation की बात आता है. For ornamental fishes, pigmentation and the color one is very good. So these are the copepods. If you see something like this and this like this, they are all same. One is with the eggs, another one is without the eggs, and this is the naupuli, which is very commonly available, and this is like good for the small larvae fishes. The larvae may difficult like eating them because they do very fast swimming. Okay, so naupuli to like they can get like easily. So आपको identify करना है. You have to see the characters: antennae, thorax, abdomen, and the caudal arms. Next, this you may not see here, but infusoria, that is very important for the like for us. For example, you bring some fishes, like aquarium fishes in your aquarium, okay, and then suddenly they do breed, okay, but you don't know like how to provide the feed, which is artificial ones. They will not be eaten. So the easiest thing what you can do, if some fishes breed in your aquarium, so you can do is you make the infusoria. That can be easily like prepared by yourself. Take a like water, both jar ले लो water, and then after that you put some vegetable waste जो आपका छिलके निकलता है ना, उसको डाल दो. After 1 or 2 days there will be some light brown white color, whitish type का जो है ना आ जाता है. That is full of parameciums. Okay, वो आप खिला सकते हो babies को. And then after that you have like बाकी जो मिलता है तो दे सकते हो, but the first instant जो है ना वो provide करने से भी they can survive. So now
Infusoria refers to the microscopic single cell animalcules belonging to the class Ciliata, and phylum is Protozoa, and this can be like provided in the uh, like in the fish larvae, as I said. Okay, so besides being small in size, they are short bodies and nutritionally very rich, and therefore serve ideally as a starter diet for early stages of fish larvae. जो मैंने बताया ना, ये अचानक से आप ऐसे ही दे सकते हो. So in early developed stages of fish larvae, infusoria are indispensable. So it's very good. You can do like, and very easy है. जो हम जू प्लैंक्टन कल्चर करता है उससे भी ज्यादा इंस्टेंट वाला ये कर सकते हो आप. There are now, so these are some of the infosorias. There are many types, but you can see the parameciums and all. So these are some of the like infosorias which you see under the microscope. Now, like on top of these, many research lab which cultures the that is zebrafish. Okay, so they do culturing of the Artemia. मैंने दिखाया नहीं because we are not culturing Artemia, but Artemia is also one of the very like handy and very easily culturable species, because you can buy cyst. उनका egg जो है आता है वो है ना, सीज उसको आता है तो आप मार्केट से ले लिया, लाइक एनी कंडीशन में ले आए आपके पास आया, एंड देन यू लाइक टेक ए जार, लाइक आपको कॉर्न वाला टाइप का ले लो, उसमें आपने लाइक सी वाटर का उसमें करना पड़ता है, सॉल्ट वाटर में करना पड़ता है, लाइक यू हैव टू मेक अ वाटर लाइक ए सी वाटर, बना लिया, सीस डाल दिया, देन यू ऑल्सो प्रोवाइड एरिएशन, जो आप स्टोन में जो बबलिंग करके रखो, आफ्टर 2 days they will start hatching out. So that is very easy means, but they are very expensive. You can search in the internet, that is very expensive. So but what we are doing is like almost costless, है ना, all whatever we are using is waste, poultry dropping, cow dung, and then oil cakes. So that is like कोई भी फार्मर करता है तो उसको उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगा, और उनकी फीस का हेल्थ, उसकी रियरिंग और फीस का बहुत अच्छा फायदा हो सकता है. दैट्स वाई, सो लेट अस स्टार्ट. मोजेस विल हेल्प यू, एंड फर्स्ट यू हैव टू टेक द zooplankton from here, and you will be having 2 beakers, 1 droppers, then उसके बाद आपके पास स्लाइड होंगे, एंड देन नीडल होगा. तो आप यूज करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कीजिए एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम. ओके, थैंक यू. या या यस yes, yeah, you have to standardize. You can fit them, no problem, because in the European condition, like if you are like producing the larvae which are very expensive, then you may earn lot of things, तो उसके लिए no problem. पर आप लॉन्ग टाइम में करोगे, उसका like 1 kg में 6,000 ही खर्चा कर दिया, तो it's like very difficult. Yes. One मैं information- रिसंग ngang video na. I think we're missing out one organism that we did not anticipate. That is, you'll see a black organism here. Right? That is called cypress. Cypris. Yeah. So this cypress is also a crustacean, right? And it's in the order of ostracods. So you'll be seeing an organism that is similar to this structure. All right. Now, in aquaculture, what we try to do is we try to avoid ostracods, because of the fact that they have a very thick exoskeleton, that is, the carapace is very thick, and their food are equipped with claws. So in most larvae culture, because the larvae does not have the ability to choose which diet or which organism he or she has to eat, so it feeds on whatever that is moving, and this ostracods moves very slowly.
And of course, visually, it is very identifiable because it is black in color. So they consume a lot of ostracods. Now, in the intestine or in the gut, which is just a long tube in its initial stage of the fishes, this ostracods, they can even pass through the intestine, comes out alive. In the process, they cause injury on the intestine, which also causes the mortality of fishes. All right. So if you can just pick the sample from here and focus it there, I'll just come around and you'll be having, I think, 4 to 5 of organisms, and we will help you to identify them. All right. Yeah. Yeah. Please. Yeah. We'll give you. We do have. We do have. Yeah. Let's go time. Yeah. Single spike. Yeah. Daphnia, Which one? the center one. The center one is the cypress. Oh, It's a bean-like structure. You can see it, no, it's a mixed right? structure. But how does the differentiate between the cypress Yeah. and the Daphnia? Definitely. They are having the You single no, you focus it and then you'll see it around it. Now I'll give you the sample. Can you mount it and you can really have a very good look at it. No, I'll give you. We'll give you slides. Alright. There are cover slips here. Droppers, we have it with you. I'm just coming around with the samples. Yeah, of course. Yeah, you can also use them. Yeah, it's coming. Mm-hmm. Update. Yes. Slides. Yeah, I'll give you. You're coming. So what did? Marao. Slides चाहिए? You have it? In the slides? Ma'am, you need? All right. What do we do with the needles? Yeah, if you want to change, to put the cover slip. Yeah. Daphnia is colorless. Yeah. Okay. And the Ma'am, you the slide? cypress is having some dark color. Yes. With a median eye. I think you can have I more. already have it. You want to do it? Use color? Guys, just show it so I saw it. All right, great. Now you can use that. If somebody's there, you do it. There will be a small test, and बाद में they'll ask you. You can get a sample from the table. Look around. You guys did some slides, hopefully, huh? You can call me. I'll identify for you. Yeah, please. All right. So this is a no play. Okay. I have a pen. I forgot the pen. No play. So it's this one. NAU. PLII. It's a larval stage, right? And the no play of your copypot. All right. So you're having a structure something like this. Yeah, right. Something like this, and then you'll have 4 appendages. Right. Something like this. Yeah. काफी मिल जाएगा. There are so many. Just focus it 4, and then you'll get it. So it has not differentiated yet. All right. So you can keep calling me. I'll just come and identify for you. एक थोड़ा नोट्स बना के रखते ना टेस्ट में आ सकते तो मुझे आ रहे या नमस्ते मैंने पंग रहा क्या कर रहा है तू I gave you no I bought so much okay yeah exactly yeah. And one more I can see Yeah. small. Yeah. I don't. You need more slides? Yeah, that's a no play. It's a no play of copypods. If you'll get more sample, then you will see cyclops. So they are copypods. Yeah. Can I'll come. All right. Very good. Can you identify? No. First one. This is the cypress. That one. No. Oh, that is a cypress. It's gonna. You can observe the claw. It's quite sharp.
देख लिया वेरी क्लियर आ रहे साइप्रिस है अच्छा आजा ब्लैक वाला साइप्रेस हाँ ठीक है हाँ ये साइप्रिस है दिस इसे इज रिमूव करना होता है वहां से क्योंकि ये हाँ, फिश हाँ, हाँ। को टॉक्सिसिटी करता है ना या हार्मफुल मनूम ले रहा हूँ याम शाप ओइ बने माई सीरीशन दो मनूम नुसुम डॉट बने बा चत का हिंदुस्तान दो ममांगिदु करीदा which one ममांग हाइस्रा that's engine the engine अच्छा ड्रॉपर जैसे क्लीन करो कंसंट्रेशन होता है ये तो कंटामिनेट हो गया ना इसमें दो no that's all right ले लो no problem आई कैन मिक्स yeah sure इसमें मुझे दो दिख रहे हैं एक तो मुझे डेस्निया लग yeah रहा है one is a Daphnia एंड द the other one is a cyclops the copypod वाला साइक्लोप हाँ copypod है cyclops इसमें कुछ है ही नहीं वैसे पानी पानी इसमें कुछ है ये देख लिया मैंने yeah coming Is there anything there inside this? बहुत सारा है बहुत सारा हाँ. अच्छा yeah of course yeah something like that this side sorry no इसी cypress ने is that a claw? yeah see watch it 4x the yellow very sharp you know see the Is yellow that a claw? yeah see the yellow yeah if you focus at 4x you can see a bigger picture okay I think a little more focus yeah that's a copypod cyclops identify किया cypress yeah get more sample you'll get more इसको घुमा दे रहा हूँ ओह हो ये देखो ये देखो अब ये देखो look at this one हाँ हाँ मैं बोल लूँगा Mr. Cyclops हाँ it's a copypod Srinivasi like that look at this one with the eggs yeah Cyclops आप ले लो चलिए माइक ले लीजिए ये आपने ये देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना ओके माइक्रोस्कोप में दिस इज कॉल्ड एज सिरोडिफिनिया है मैंने सिरोडिफिनिया क्यों बोल रहा है यू विल सी द हेक्सागोनल सेल स्ट्रक्चर देखो हेक्सागोनल हाँ तो वो कंफर्म करता है तुम्हारा सिरोडिफिनिया देख लिया तुमने एंड देन दिस इज द नौकुलाई ये देखो नौकुलाई देखा ठीक है कितना हो गया अराउंड 2 हो गया टिक करते रहो यू हैव सीन 2 स्पीसीज देन आफ्टर देन ये देन यू सी नौकुलाई बहुत ज़्यादा है वेयर इज द डेफिनिया ओके डेफिनिया के लिए तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा ठीक है
इसमें कुछ दिख रहा है. Yes. This is Defenia. See. Defenia हो गया. तुमने और वो साइक्लोप्स दिखाता हूँ मैं आपको. Yes. ये हो गया साइक्लोप्स विदाउट एग्स. ठीक है. कॉपी पोट बोला. कॉपी पोट. ठीक है. तो आपने क्या क्या देखा वो नोट डाउन करो. ठीक है. मैं अभी आपको दिखाता हूँ और क्या. यहाँ पे भी एक बढ़िया वाला ना वो मिल रहा है. ब्यूटीफुल विद एग्स. दैट इज क्या है बताओ मेरे को. यू टेल मी. The female pseudotype. वेरी गुड. फीमेल सीरोडेफिनिया है. बिकॉज ये जो ना इट्स वेरी स्मॉल. ठीक है. एंड देन यू कैन फोकस इन द 10x. देन यू विल सी रियली गुड. मैंने किया था 10 फीट वाला ना. ये देखो सी तो सही ना. कितना बढ़िया से दिख रहा है आपका. हेक्सागोनल. अब मूव करो इसको. फोकस करो. उधर इधर 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 पकड़ के मूव करो. हेक्सागोनल सेल्स दिखाओ. खुद धीरे धीरे मूव करना. धीरे धीरे. आपका क्लियरिटी के कहाँ पे है देखना. आपको यहाँ पे ना सीरोडेफिनिया देख रहा है. नाउबिलस देख रहा है. डेफिनिया देख रहा है. इफ एनीवन वांट्स टू सी कोपीपोट्स भी दिख रहा है. मोइना. या मोइना. यस यस. वेरी गुड. इट्स वेरी गुड. ये देखो मोइना है. सर सब दिख रहे हैं. हाँ दिख रहा है सब. मैं देखूंगी एक बार. कहाँ से होंगे? एक सब फीडबैक कौन गया होगा सबके पास सब भर दीजिएगा. एक ही है ना. हाँ ये हाँ भी यहाँ पे एक वो दिख रहा है आपको हेक्सागोनल वाला. दैट इज कौन सा है. सीरोडेफिनिया. उसको पहले देख लीजिए. उसके बाद मैं दिखाऊंगा. So interesting. वो हमें तो नहीं दिखा वहाँ. दिख गया. Very nice. हाँ और एक दिखाता हूँ मैं आपको. I'm from chemistry. I'm just enjoying Okay. seeing all these. And this is the- ये देखो. दिस इज द नाउप्लाई. कोपीपोट का बच्चा. छोटा सा है. हाँ पहले वाला का बेबी है ना. हाँ. नहीं नहीं उसका दूसरा वाला को मैं बता दूंगा. ये वाला इसका बेबी है. यहाँ पे साइड में बना रखा है ना एक. हाँ. वो है हाँ बेबी. जो कॉर्नर में. इसका वो दिखाता हूँ बड़ा वाला. ये देखो. दिस इज द डेफिनिया. डेफिनिया देख लिया ना. हाँ. देन मैं कॉपीपोट दिखाता हूँ आपको. Fish eats all this. यस यस. ये देखिए. दिस इज द कॉपीपोट. दिस इज द कॉपीपोट. दिख गया मैम. ये उसका विदाउट एग्स. Without eggs, yes. हाँ वो है. आपने सारे हैं. सारे. एक साथ सारे. एक स्लाइड में. मैं वो गाँव जाऊँगी. I think so. It should come on page. हाँ picture. यहाँ पे ये भी दिख रहा है. साइप्रिस भी देख रहा है. जो ब्लैक वाला. हाँ black. साइप्रिस पूरा ऑलमोस्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे ना. मैम आप भी फोकस करके देख लीजिए. माइक्रोस्कोप हैंडल करना आपको आता है कि नहीं आता है. नहीं आता पर मैंने थोड़ा थोड़ा सीख लिया. मैंने देख ओके लिया. ओके ओके. हाँ हाँ ओके 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 ओके. ठीक है ठीक है. या यस. वेरी गुड. थैंक यू सो मच. या एक्चुअली मैं एक चीज़ कहानी बताता हूँ. मैंने अभी बताया नहीं. एक्चुअली एक बंदा था. ओके. वो समुंदर में ना एक छोटा सा बोट के साथ वो लॉस्ट हो गया. ही वॉज लॉस्ट. और 2-3 महीने के बाद उसको मिला ना तो वो हेल्दी नहीं था इतना. ठीक है. सो ही वॉज मच मोर हेल्दी देन द
लाइक उसका जो पहले खोने से पहले था उससे ज़्यादा मोटा हो गया। कैसा हुआ? ये था कि उसने ना क्या किया, वो पूरा मतलब सी के बीच में चला गया बहुत आगे, तो उसने उसकी कपड़ा यूज़ करके शिफ्ट कर करके जू प्लैंक्टन खा रहा था वो। तो जितना एमिनो एसिड, फैटी एसिड सब मिल रहा था उसको, और मोर ओवर उसको पानी भी ज़्यादा पीना नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा होगा। तो वो प्योर जो फ्रेश वाटर वाला है वो हर समुद्र में रहने वाला एनिमल के अंदर मिलता है। आपको समुद्र वाला पानी डायरेक्ट पियोगे तो आप जो है ना मर जा सकता है। तो ऐसा करके वो हेल्दी और हेल्दी होके मिला है। तो ये कहानी था जू प्लैंक्टन्स का। और दुनिया में ज़्यादा बड़ा से बड़ा वेल यही खाता है, वो कुछ नहीं खाता है वो। दे ईट जू प्लैंक्टन्स। How are all of them taking pics? हाँ, पिक्स ले सकते हो। कैसे? ये इनको तो माइक्रोस्कोप दिख रहा है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेगा कोई लेंस किस तरह ऐसे ही ले रहे हैं पिक्स सब। मेरा रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होगा शायद। लेकिन है ना? अच्छा। एक मिनट ऑर्गेनिज्म दिखना चाहिए। अच्छा, like this. All right. इसको थोड़ा Okay. छोटा करना पड़ेगा, मैं करता हूँ। I want to show my family. Oh yes, you got it. ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, इसको मैग्नीफाई हो गया। ऐसा क्लिक करता है जैसे छोटा वाला का ले लेता हूँ मैं, इसका बड़ा हो गया। तो उसमें सारे पानी की टैंक ऑप्शन होते हैं। मैंने जीडी के ना 6-7 एमडीपीस लिए, मेरे सब पे A+ ग्रेड है। ये मेरे को पता नहीं क्या लेके आऊंगी। तो मैं नोट्स तो बना रही हूँ, मैं यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ के देखती हूँ। यूट्यूब पे तो दोगे ना सारे वीडियो, फ्राइडे को सारे बायोटाइप पे तो मुझे सारे बायोटाइप क्वेश्चंस होंगे ना, फेल ना हो जाओ। फेल तो नहीं होंगी। ये साइक्लो कॉपी पोट, मैं अभी नहीं क्विज भेजेंगे कॉपी फ्राइडे पोट से। संडे को होगा। हाँ, कॉपी पोट एक नहीं है उसके पास। एक्चुअली इसके ऊपर संडे तक साइड देंगे। हाँ, ये फोल्डेड हो गया ना, इसमें भर गया है इसके लिए। आपको बस डेली फीडबैक फॉर्म भरना है, ठीक है, फ्राइडे तक। फ्राइडे को आपको क्विज सर देखिए इसमें किसी में भी नहीं। इसके बाद आपको अचानक तो वो ऐसा हो गया, इस तरफ आ गया। ये इसमें आपको वो दिख रहा है। संडे तक ही देना है ना, एक वीक होके। This is बायोडाटा तो नहीं होगा ना, पता नहीं। जैसे मैं अपनी केमिस्ट्री के साथ कोच करके देती हूँ कॉलेज की, पता नहीं क्या करूँगी। देखो इकोनॉमिक्स वाले भी तो सोच समझ के देंगे असाइनमेंट, बायो के नहीं देंगे। ऑनलाइन गूगल फॉर्म गूगल फॉर्म। अच्छा, क्विज गूगल फॉर्म के थ्रू हो रहे हैं। ये जीएडी वालों का जो अपना मूक्स है उसके थ्रू नहीं दे रहे हैं। उनका है ना डबल का, उनका अपना ही वो है, मूक्स करके है क्या वो। मैसिव ओपन लर्निंग वाला। हाँ उनका है ना जीएडी का। मैसिव ओपन लर्निंग तो लिंक में चला जाएगा उसका। गूगल फॉर्म से होगा। असाइनमेंट के लिए मैंने बोला है कि 1 वीक का टाइम दिया है असाइनमेंट प्रोजेक्ट के लिए। रामानुजन कॉलेज वाली है ना, रामानुजन वाली वो तो 21 से स्टार्ट 21 तक है। 1 मंथ है, वो चल रहा है दूसरा। हाँ,
फोटो खींचो। नहीं नहीं, इसमें क्लिक करो तुम, मैं पकड़ रहा हूँ। मेरे को क्लिक करो इसमें, फोटो वाला ना, मेरे को रुको, मैं बताऊंगा उस टाइम पे करना। क्लिक करो। नहीं यूजुअली मैंने जीएडी के किए हैं तो जो ये स्पीकर्स होते हैं आपकी पीपीटी बस से आता है बट इफ यू डोंट हियर प्रॉपर्ली यू कैन नॉट गेट सो मैम ये लीजिए। थैंक यू सो मच ठीक है, थैंक यू ओके। एक मिनट। ये है सीरो डेफिनिया, डॉक्टर लुकराम। लुकराम मतलब हुआ। या lovely pics like really Okay, okay. amazing I'll show my ये niece and मैं my KMC family में हूँ मैं। अच्छा thank you I'm Shuchi IT कंफ्यूज होगा तो मैं समझाऊंगा बाद में, बता दीजिएगा। thank you so much thank you मेरा एक टेक्नोलॉजी है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी करके, अभी बोला था ना सेमिनार में, वो मैंने KMC में शुरू कर रखा है। okay उसका भी होगा ट्रेनिंग। दैट इज़ वेरी इजी वे ऑफ कल्चरिंग फिश विद द वेरी स्मॉल वाटर बॉडी, एंड वो सेल्फ सस्टेनिंग है, उसका भी मैं करूँगा। और तीसरा जो है हमारा मस्टर्ड ऑयल, ये है हमारा मस्टर्ड ऑयल। कोमल इज कॉल्ड खल, सरसों के खल। सरसों का खल। तो ये जो तीनों अमाउंट जो है, तीनों का क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट रेशियो में, जैसे इसका 1:1:1 रेशियो में इसको हम मिक्स करेंगे पानी के अंदर। तो कितना अमाउंट है, जैसे हमारे लैब में जैसे स्टैंडर्डाइज किया गया है अकॉर्डिंग टू श्रीवास्तव एट ऑल 2006, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा जो बेस्ट ग्रोथ होता है वो होता है अगर हम 1000 लीटर वाटर लेते हैं, तो 1000 लीटर में जो हमारा ये तीनों का इक्वल जो अमाउंट होना चाहिए वो होना चाहिए 0.526 kg, ठीक है। क्योंकि ये 1:1:1 रेशियो में है तो इसको हम डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमारे कितना आएगा 23 ग्राम पर ईच सब आएगा। लेकिन हम फाइनली जब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो टैंक कैपेसिटी है वो 130 लीटर है, इसका 160 लीटर कैपेसिटी है, लेकिन हम मेंटेन करते हैं 130 लीटर यूनिटरी मेथड से कर देंगे, क्योंकि वो 1000 लीटर तो हमारा एक बेस आ गया। क्योंकि आपके घर में तो कोई और कंटेनर होगा तो अलग अलग कंटेनर होगा, तो दिस कंटेनर इज 130 लीटर। तो अकॉर्डिंग टू 130 लीटर तो हमारा कैलकुलेशन है फाइनल यूनिटरी मेथड से, तो हमारा आ रहा है 23 ग्राम पर। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो हमारे ये सारे ड्राई हैं, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, बट जो हमारा काउ डंग है दिस इज फ्रेश, तो यहाँ पे मॉइस्चर 90% मॉइस्चर है, तो उसको हम क्या करते हैं इंटू 10 कर देते हैं, तो वो जगह हमारा 230 ग्राम। ये कैलकुलेशन कहाँ लिखी है ये कैलकुलेशन नोट्स में है हाँ आपके मैनुअल में भी होगा, आप नोट भी कर नोट से है, आप नोट भी कर सकते हैं। आप बेसिक मैनुअल में है, बस एक आप बेसिक लिख लो 0.526 kg पर 1000 लीटर और मीठे क्यों भी 1000 हाँ 0.526 kg per 1000 liter. all These are the mixture of all Per because they are in the 1000 ratio 1:1:1. per 1000 liter per 1000 liter 0.5 to 6 5 to 6 kg 5 to 6 kg per 1000 liter, And and they are taken 1:1:1 in a ratio of 1:1:1. इसमें क्या क्या 1:1 में काउ डंग Cow dung, poultry droppings, and mustard oil paste. They are. It is written in your manual. मस्टर्ड ऑयल We are cultivating zooplankton. Zooplankton. Yes, only zooplankton. Phytoplankton should be cultivated. So after that, हम क्या उसको क्या करें, लेके हम पानी में मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फॉर द डिकम्पोजिशन उसको हम 10 डेज के लिए रखेंगे, सो दैट वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाए। हाँ, इन द वाटर उसका सारे का सारा डिकम्पोजिशन होगा। तो डिकम्पोजिशन क्यों होगा, आपने फूड चेन का नाम सुना होगा, क्योंकि ये जो जू प्लैंकटन है वो बैक्टीरिया को खाता है और जू प्लैंकटन फिश को खाएगा। तो इसके लिए अगर जू प्लैंकटन कल्चर करना है तो उनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो उनको कहाँ से बैक्टीरिया मिलेगा, फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑल दिस वेस्ट। कितने दिन छोड़ो 10 days. So 10 days for decomposition. टेम्परेचर का तो कोई इशू नहीं है, जैसे नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। सर सर्दियों में भी हो जाता है हाँ होता है। देखिए आपके पास स्पीसीज लगी हुई है, आपके अलग अलग सीजन पे, जैसे हम यहाँ पे पॉलीकल्चर मेंटेन कर रहे हैं, तो अलग सीजन पे आपको अलग अलग स्पीसीज मिलेंगे।
जैसे अभी और हमारा जो चल रहा है, अभी जो सीजन है, इसमें आपको मोस्टली डेफनिया मिलता है। डेफनिया, सिर डेफनिया, मीजोसाइक्लोस, ये आपकी तीन डोमिनेंट स्पीसीज रहेंगी। इसके अदर और भी रहती हैं, कुछ रोटी का हर ऑर्गेनिज्म का सीजनल होता है ना, उनका ब्रीडिंग सीजन अलग अलग होता है, तो टेम्परेचर उसके के हिसाब हिसाब से से हम चेंज होता है। करते हैं। उसके बाद हम 10 डेज के लिए डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ देंगे। नहीं, इसको हम स्टेयर करेंगे सुबह एंड शाम, नो प्रॉब्लम। इसमें सब है नहीं है ना, इसमें नॉर्मल लग जाएगा। देखिए, ये जो सारा किया गया है, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। ऐसा नहीं है कि 10 डेज हमने डिसाइड किया है। हमने 10 कुछ डेज भी 15 रखा है, 5 डेज भी five रखा days भी है। है। जो बेस्ट रिजल्ट आया है वो वो 10 days हमारा 10 डेज का है। 10 डेज मतलब एक ऐसा टाइम और है ये भी जिसमें most रेशियो of जो the लिया है ना हमने हमारा 1:1, bacteria तो grow हमने करता है। अलग अलग रेशियो में भी लिया है, बट जो बेस्ट रिजल्ट है वो है, क्योंकि हमें बेस्ट रिजल्ट देखना है ना, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड है हमारे लैब। अभी हम जो मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मीडिया है। आप मार्केट में जाओगे, कुछ आर्टिफिशियल मीडिया मिलेंगे, जैसे आप ईस्ट यूज़ कर सकते हो, उसमें भी आपके जूप्लैंक्टन ग्रो करेंगे। लेकिन हमारा क्या केस है, हम क्या कहते हैं कि हम इकोनॉमिकली बेनिफिशियल देखना चाह रहे हैं। डायरेक्टली हम जो ही यूज़ करेंगे, सारे के सारे बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट को बेस्ट में यूज़ करेंगे। आफ्टर ऐसा नहीं है कि हमारा कल्चर होने के बाद भी हम जो है इसका जो डेब्रिस बचेगा वो भी एज ए मैन्योर यूज़ हो सकता है। आप उसको क्रॉप फील्ड में कहीं भी डाल सकते हैं, वो मैन्योर यूज़ हो जाएगा। Okay, So so you after 10 decompose it here, and after 10 days you take it and you. No. So this is the decomposition process after 10 days. यहाँ पे then after 10 days we will inoculate the zooplankton. So from any pond आप zooplankton लाओ। अगर आप मोनोकल्चर करना चाह रहे हो तो एक पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप में देख के वो मोनोकल्चर करो, बट हमें मोनोकल्चर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिश पे हमें So like for example, after 10 days you inoculate with a fresh set of maybe zooplankton. So like how often do you replace it, or you just keep it? No, we will not water replace. dry? We will add manure again and again. Okay. Do you, what about We'll the go water? step by step. Okay. We'll go by step by step. So after decomposition for 10 days, then we'll inoculate the zooplankton. And for the for their growth, it will take around 7 days. Okay. तो एक हफ्ता चाहिए होता है उसको जूप्लैंक्टन्स को ब्लूम करने में, ठीक है। अब क्या हुआ, जूप्लैंक्टन्स बहुत सारे हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, उसको हम आइसोलेट करेंगे। अब आइसोलेट कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे डिफरेंट सीड्स मटेरियल है, वहाँ से हम आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मोनोकल्चर करना है तो हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज डालेंगे, क्योंकि जनरली हम तो रिसर्च उस पर नहीं कर रहे, हमें तो फीड चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए, मछली के लिए चाहिए, तो हम पॉलीकल्चर कर देते हैं, सो दैट एवरी zooplankton will come from the culture। ठीक है, यहाँ पे किसी को प्लैंकटन का जो आप मदर कल्चर है वो कहाँ से लाते हो फिर? मदर कल्चर आपको कहीं भी पॉन्ड से मिल जाएगा, कहीं किसी pond वाइल्ड कहीं से भी मिल सकता है आपको। जैसे पर्टिकुलर मोनोकल्चर करने के लिए क्या हमारे पास जैसे बैक्टीरिया के तो हमें स्ट्रेन्स मिल जाते हैं, तो इसका हाँ, कल्चर आप कल्चर मिलता है इसका। कल्चर मीडियम सेम रहेगा, चाहे आप मोनोकल्चर करो या पॉलीकल्चर करो। स्टार्ट एंड कल्चर। हाँ, कल्चर आपको आप वाई कर सकते हैं, मार्केट में कल्चर मिलता है। अगर आपके पास पॉलीकल्चर भी है तो उसको आप ड्रॉपर की मदद से, उसको ड्रॉपर की हेल्प से बाहर निकालिए, सेपरेट कर लीजिए, बिल्कुल प्योर होना चाहिए। इवनली हमने करा है, डेफनिया का प्योर कल्चर यहाँ पे करा, मेंटेन करा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास इतने सारे टैंक्स हैं तो आप इसको हमने बोला कि कल्चर मीडिया को डिकम्पोज होने के लिए 10 दिन लगेंगे। 10 दिन के लिए आप क्या करेंगे, इसको स्टीयर करेंगे। अब वही स्टिक मैंने इससे स्टीयर कर रहा हूँ, वही स्टिक मैंने उसमें डाल दिया, तो कंटेमिनेशन आएगा। ठीक है, तो ये मेंटेन करना हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारा हाइजीन, बहुत सारी चीज़ें प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, तब जाके वो मेंटेन होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ मोनोकल्चर कर रहे हो तो उसका स्टडी कर रहे हो, सिर्फ अगर डेफनिया का स्टडी करना है तो उसको मोनोकल्चर। अभी आपको लेकिन हमें फिश के लिए हम मल्टी पॉलीकल्चर करके हम सब कुछ दे देते हैं खाने के लिए। अगर हाँ स्टडी कर रहे हो कि हम इफेक्ट ऑफ जीरो डेफनिया ऑन फिश, तो हम तब मोनोकल्चर करते हैं। अगर आपका स्टडी के हिसाब से, अगर आपको जैसे आपको कुछ जो एक्सपेरिमेंट चलते हैं वो सप्लीमेंटेशन पे चलते हैं कि आप सिर्फ उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी पे ही काम कर रहे हैं, जैसे आपको डेफनिया पे काम करना है, उसकी ही न्यूट्रिशनल क्वालिटी चेक करनी है। इवनली आपने देखा उसका अमीनो एसिड देखा, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई अमीनो एसिड कम आ रहा है, आप उसको सप्लीमेंटेशन दे रहे हो, तो वो जो आपका काम है उस टाइम के लिए आपको मोनोकल्चर चाहिए, क्योंकि आप स्पेसिफिक स्ट्रेन पे, स्पेसिफिक स्पीसीज़ पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो कल्चर हम मेंटेन कर रहे हैं वो इसलिए है कि जो लार्वी है हमारा, मोस्ट ऑफ द लार्वी जो है, जो फिश एक्वा कल्चर में जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है वो यही है कि 90% मोर्टेलिटी हो जाती है लार्वल स्टेजेस में। फिश के 1, 2, 3 डेज की जो ब्रीडिंग रहता है उस टाइम पे मोस्टली जो होती है मोर्टेलिटी होती है। अगर उस टाइम पे आपको फिश को बचाना है, लार्वी को बचाना है, तो बेस्ट सोर्स यही है, ये इसका नेचुरल फीड है, नेचुरली इसी पे वो फीड करेगी। जी बताइए। So how much of the survival percentage are you able to retain with this feed?
the fishes. How much percent? आपने बोला था कि जी। if you don't give this kind of proper हाँ। diet, the mortality of the 90%. fish. हाँ 90%, above 90%, Okay. we are able to save the. इवन नॉट ओन इवन फॉर मोर्टेलिटी, इवन फॉर 100% ब्रीडिंग। आप ब्रीडिंग के लिए जाएंगे मैक्सिमम जहाँ आपकी ऑर्नामेंटल फिशेज रहती हैं, हमने करके देखा है। हमारे पास यहाँ पे स्वॉर्ड टेल फिश है, जिफोफेरस हैलेरी, आपको दिखाया होगा, उसका ब्रीडिंग हमने यहाँ पे करवाया है। तो उसके ब्रीडिंग के लिए हमने अलग अलग डाइट दी है, हमने आर्टिफिशियल डाइट बनाया, हमने जू प्लैंकटन खिलाया। जो ब्रीडिंग के टाइम पे जिस फिश ने आर्टिफिशियल फीड में 10 दिन में ब्रीड कर रहा है, उसी फिश सेम फिश ने इसमें 5 दिन में ब्रीड किया है। This diet. यस। तो तो यहाँ अभी- पे एक जैसे हम लोग आपके मन में कभी कंफ्यूजन आता है कि जैसे हम पोल्ट्री वेस्ट ले रहे हैं तो ये दिस इज द फूड फॉर द जूप्लैंक्टन। नो, दिस इज ओनली फॉर द ग्रोथ डिकम्पोजिशन प्रोसेस, दिस इज फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड दैट बैक्टीरिया they are the food for the zooplankton. Okay, and the zooplankton is for the And small these fishes. zooplankton Small are fishes. for the small fish. अच्छा, अच्छा, अच्छा. And Oh, these are there's a small fish, they are food for the chain. big fish, there is a food chain. And Can you show zooplankton? या अब ऑब्वियसली हम शो करेंगे। अभी उससे पहले उसको उस स्टेप पे जाने से पहले हम यहाँ पे हम कल्चर बनाएंगे। अभी जैसे पहले ग्रुप ने यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये कल्चर मीडिया वो बना के गए हैं, सेम इस ग्रुप में भी आप कल्चर मीडिया बनाएंगे। टैंक रेडी है, हम लोग हमने जो आपको कैलकुलेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग वे करके हम इसमें वे करके डालना है, डिकम्पोज के लिए 10 दिन के लिए रखना है। तो स्टार्ट करेंगे 0.23, 230. यस। तो 23 ग्राम और 230 ग्राम Oh, sorry, 23. आप यहाँ से वो ले सकते हैं, ग्लव्स ले सकते ले हैं। लीजिए। अगर बिना ग्लव्स के करना है कर सकते हैं, नहीं तो ग्लव्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Oh, sorry. जो एक कोई भी वे सकते हैं, मिल के वे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ग्लव्स लेना तो ग्लव्स ले लीजिए, ठीक है। तो आप ऑयल मस्टर्ड के अभी इसको ऑन कीजिए, यहाँ से ऑन कीजिए, वो है फाइटोप्लैंक्टन कल्चर, ठीक है। इसको टेयर कर दीजिए। और अंदर वो जो सेल हाउसेस है वो उसके अंदर इसके अंदर 23 ग्राम ग्रीन हाउस है ना, उसके अंदर वो सब होगा आगे, आप नेक्स्ट सेशन में सब होगा। 24, I think it's okay, no? हाँ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो विंटर मंथ्स में कौन सा zooplankton ज़्यादा होता है? इट्स ओके सर, नो प्रॉब्लम। फिर हो जीरो जाएगा. डेफनिया जो है ना विंटर में ठीक है, केजी ना यस ये केजी। वाला डाल दो 46. हाँ आप इसी में मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्टली आप इसमें डाल दीजिए और फिर जो है डायरेक्टली वो कर नया कर लीजिए, ठीक है। ये तो हमने 23 ग्राम जो है इसमें डाल दिया है, ठीक है। और सेकंड जो है ये हमारा क्या डाला है अभी, ये क्या है हमारा मस्टर्ड ऑयल केक, और नेक्स्ट हमें क्या डालना है पोल्ट्री ड्रॉपिंग। तो दिस इज़ पोल्ट्री ड्रॉपिंग, इसको बे कीजिए, हाथ से कर लीजिए, ज़्यादा गिर जाएगा। ग्लव्स लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम नहीं है, स्पैचुला भी रख सकते थे ना। यूज़ कर सकते हैं अपने अपने उसके हिसाब से है, कन्विंस के हिसाब से। ये सब कहाँ से खरीदेंगे? मार्केट में सब मिलता है, मस्टर्ड केक। मस्टर्ड ऑयल केक मिलता है, केक तो किसी भी आप पोल्ट्री फार्म पे जाएंगे पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स मिलेगा। हो गया 23, ये सारे आपके zooplankton अभी चल रहे हैं। ये सारे ठीक है। ये हमने 2 डाल दिया। उसके बाद हमारा तीसरा जो मीडिया है, तीसरा मीडिया में हमारे पास काऊ डंग है। आप ग्लव्स पहन लीजिए कोई एक, और वहाँ पे 230 उसमें हम वे करेंगे। ध्यान रखेंगे इसका भी नहीं affect करना है। हाँ फायदा। अच्छा हाँ, एक बार सुन लीजिए, फिर इसको हम ना फेंकेंगे नहीं इसके बाद में, क्योंकि देखो खाना खत्म होता है तो हमें तो खाने की ज़रूरत है ना बार बार देने के लिए। तो फिर हर 5 डेज़ के बाद इसको हम डिकम्पोज एक अलग से हम टैंक बनाएंगे, उसमें सारा का सारा ऑलरेडी डिकम्पोज कर देंगे। तो जो डिकम्पोज मटेरियल है वो फिर हम इसके अंदर हर 5 इसमें डाल से दीजिए, के उसमें 230 ग्राम करना है। इसको सीधा कर लीजिए, Water निकालेंगे देखिए भी। जी। नहीं वाटर लेवल अगर कम हो जाता है तो वाटर लेवल मेंटेन करेंगे उतना ही। नहीं, तो जैसे कि सपोज हर 5 डेज फेंकना नहीं है, वाटर सेम रहेगा, ये ऑलरेडी वो आपको मेंटेन करना है, आपको मार्क करना है। लीटर हमने पानी लिया हाँ suppose पानी चेंज नहीं करना है। आप कहना हम अलग से डिकम्पोज करके फिर वाटर ऐड करेंगे। हाँ। तो एक टैंक ऑलरेडी फुल है, इसमें जगह इसमें एवेपोरेशन होता रहेगा, 5 दिन में होता रहेगा, पानी कम होगा तो। और उसमें जो हमें डालना है वो हमें कंसनट्रेटेड डालना है, ऐसे नहीं है कि हमें 10 लीटर पानी डाल देना है, वो कंसनट्रेटेड रहेगा। वो हम कंसर्न जैसे यहाँ तक पानी जो आप डिकम्पोज करोगे ना वो उसके हिसाब से नहीं करोगे, वो आप ऑलरेडी अपने नॉर्मल जो मिनिमम पानी डाल के जैसे ये है, जिस जनरली हम दोबारा जो डिकम्पोज करते हैं ना, ठीक है 230 ग्राम है, ये सब हम डालते नहीं। काऊ डंग भी मतलब उसके अंदर ऑलराउंडर 230 ग्राम से मिनिमम 10 डेज का डिकम्पोजिशन होता है। 130 लीटर ही बनाते हैं दोबारा से। नहीं
दूसरा हम एक कंसंट्रेटेड फॉर्म रखते हैं। तो कितना होता है कंसंट्रेट? आप कितना भी रख सकते हैं उसको, आपके कल्चर के हिसाब से है आपको एक बार कितना वो हो कल्चर गया यूज़ ना करना culture, है। बस आप उसको न्यूट्रिशन देते हैं। अच्छा, जगह 5x बना लोगे तो उसको 1x करने के लिए उस हिसाब से उसमें डाल दोगे। क्योंकि ऐसे बात करना। इनोकुलेशन चाहिए, कपिल, ऐसे बात करना। पर्टिकुलर चाहिए होता है। एक बार तो उसका हो गया ग्रोथ, तो बस आप कितना भी खाना दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी तो उसके अंदर ब्लूम है। बस उसको हमें साइकिल, उसका जो साइकिल है वो कंप्लीट कराना है, तो हम उसको न्यूट्रिशन देते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी कल्चर मीडिया डाल दिया। कल्चर मीडिया डालने के बाद सर ने आपको बताया कि क्या करना है आपने इसमें 10 दिन जो है छोड़ना है, लेकिन 10 दिन क्या करना है आपने छोड़ नहीं देना है, इसको स्टेयर करना है। ठीक है, तो अभी हमने स्टार्ट में लिया और मैंने एक पॉइंट पहले बोला था कि कल्चर करने के लिए आपको कोशिश करना है कि स्टिक अलग रहे। अगर इस टैंक के लिए ये वाला स्टिक यूज़ करें तो दूसरे टैंक के लिए दूसरा स्टिक रहे, ताकि आपका कंटेमिनेशन जो है कम, चांसेस कम रहे। तो आपको हम इसे स्टेयर कर देंगे। और ये स्टीयरिंग जो होगा आपका सुबह और शाम दोनों टाइम, ठीक है, सो दैट प्रॉपर मिक्सिंग। जैसे अभी दिल्ली का टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है, 40 के अराउंड, 40 के अराउंड, तो जो प्लैंकटन का जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा। अगर आपका 45 जाएगा ना, कभी भी पानी का टेम्परेचर वो 35 से वो अब नहीं जाएगा, वो मेंटेन करता है, पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अगर आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 45 भी जाता है तो पानी का तो कम रहेगा, उसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और अलग अलग टेम्परेचर पे आपको अलग अलग स्पीसीज मिलेंगी, वैरायटी मिलेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि पॉलीकल्चर है तो एक अगर हो भी गया किसी का डेथ तो है, और क्योंकि जो प्लैंकटन का जो रेंज है क्या करने का, वो मतलब विदस्टैंड करने का टेम्परेचर हाँ। बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, हमारे फिश की तरह नहीं नैरो, इसलिए हमने फिश को उसके अंदर रखा है। अब इसके बाद कल्चर डालने के बाद अभी हमने क्या करना है, इसको 10 डेज के लिए डिकम्पोज होने के लिए छोड़ना है। कवर करके ना। ठीक है, कवर करना है। अब हम अच्छा, अब कवर क्यों कर रहे हैं हम? जरूरी नहीं है, बट कवर हम इसलिए करते हैं सो दैट मॉस्किटो के जो मॉस्किटो जो होता है वो मॉस्किटो लार्वी ना है, तो मॉस्किटो ब्रीड करता है, इसीलिए हम इसको कवर करते हैं। मॉस्किटो लार्वी आएगा तो एमसीडी वाला परेशान करेगा, उस चीज़ से बचने के लिए नेट से कवर करके रखना कि है। हमें तो मलेरिया से भी बचना है ना, तो इसलिए हम इसको कवर करते हैं। Have you ever tried, like, so for you, according to you, this is the best ever diet, or are you like trying to kind of come up with a more composition, different compositions of diet to get a better survival? We tried very well, but this is the best. This is the best. This is best for the larvae. Even we Because आपको पता है बड़ा मछली है तो इतना छोटा तो खाना खाएगा नहीं, पेट नहीं भरेगा उसका, तो दिस इज फॉर द लार्वी। ठीक है, लार्वी जो मछली है, अगर वो तो आप जैसे जू प्लैंकटन इसमें हमने कर ली, आपके पास टैंक में, हाउ डू यू सेपरेट द जू प्लैंकटन? अभी बताएंगे आपको, वो नेक्स्ट स्टेप है। इसके बाद हमने कल्चर करने के बाद 10 दिन छोड़ना है, और 10 दिन में हमें इसमें इनोकुलम डालना है। इनोकुलम मतलब आपका स्टार्टर कल्चर, कहीं से आप स्टार्टर कल्चर लाएंगे और 10 डेज़ पे आपको इसमें डाल देना है। 10 डेज़ में डालने के बाद आपको वेट करना है 7 डेज़। 7 डेज़ के बाद आपको हार्वेस्ट करना शुरू करना है। हार्वेस्ट कब करना है? इवन 7 डेज़ पे ही नहीं करना है, क्योंकि आपका फिश उस पर स्पीसीज़ के हिसाब से वो वेरी कर सकता है 1-2 डेज़। लेकिन आपको क्या करना है, आपको देखना है, देखने पे आपको ब्लूम दिखेगा आपका। जैसे मैं आपको नेक्स्ट वहाँ पे टैंक में दिखाऊंगा जो हमारे पास कल्चर मेंटेन्ड है, उसमें आपको ब्लूम दिखेगा। सेम आपने देखना है कि अगर आपके टैंक में ब्लूम है तो आप वहाँ से हार्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हार्वेस्ट करना शुरू किया, उसके हर अल्टरनेट 5 डेज़ पे जो ऑलरेडी हमारा डिकम्पोज मटेरियल रहेगा, डिकम्पोज मीडिया रहेगा, वो आप उसमें सप्लीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया का ग्रोथ होते रहे। और हर 4 या 5 डेज़ पे 4-5 डेज़ पे आपको हार्वेस्ट करते रहना है। ऐसा नहीं, अगर हार्वेस्ट नहीं भी करेंगे तो वो नेचुरली डाई कर जाएगा, अगर इतना डेंस हो जाएगा। So 5 days के बाद समझ में नहीं आया what is that? हाँ, आपका आपने डाल दिए ज़ूप्लैंक्टन, 7 हाँ। days के बाद ब्रूम ब्लूम आया, ब्लूम आया। अब हाँ, क्या करेंगे? ब्लूम आने के बाद जैसे आप उसको हार्वेस्ट करेंगे, निकालें उसको। हाँ, कैसे निकालेंगे वो अभी मैं बताऊंगा। अच्छा, और वो क्या था, वो कंसंट्रेट करेंगे 5 days बाद, वो क्या पॉइंट था? 5 डेज़ के बाद जैसे हमने 7 डेज़ पे निकाल दिया, तो हमारा 10 डेज़ पे हमने इनोकुलम डाला था, लेकिन 10 डेज़ में डिकम्पोज हुआ तो अगले 5 डेज़ में वो कंज्यूम भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दोबारा से उसमें न्यूट्रिएंट डालना पड़ेगा। तो हर अल्टरनेट 5 डेज़ पे आप अपना डिकम्पोज मीडिया डालिए। अगर आपके पास डिकम्पोज मीडिया नहीं है तो आप फ्रेश काउडंग डाल सकते हैं, वो भी बेस्ट सोर्स है। उस पर भी हमने करके देखा है, उसमें भी बेस्ट रिजल्ट आते हैं। So basically, the bacteria that you're talking about as a feed for the Zooplankton. Yes. are they coming from the poultry droppings in their cow dung? The mixing, from the mixing. Decomposition of this, because All बैक्टीरिया these. को डिकम्पोज करता है ना मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में बैक्टीरिया करेगा। तो हम यहाँ पे डिकम्पोजिशन का मीनिंग ही हुआ कि माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। Sir, generally it supports which bacteria? Any specific bacteria or general? नो, जनरल बैक्टीरिया सर, जनरल बैक्टीरिया। ओके,
एनी डाउट? एक कल्चर मीडिया में कोई डाउट आपको? नहीं कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन? हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ गया। अभी तक हमने देख लिया हाउ टू कल्चर प्लैंकटन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अभी बताइए प्लैंकटन मीन्स क्या होता है? हम जू प्लैंकटन पढ़ रहे हैं तो प्लैंकटन, फाइटो प्लैंकटन, जू प्लैंकटन। प्लैंकटन मीन्स ड्रिफ्टर, प्लैंकटन इज ड्रिफ्टर, पैसिवली फ्लोटिंग। ये कभी भी वाटर करंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये वाटर फ्लो के ही साथ जाएंगे, ठीक है। तो प्लैंकटन कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा कुछ स्पेशल वो नहीं है कि प्लैंकटन एक किसी भी फाइलम में हो सकता है। इवन सिलेंट्रेट में ऑरेलिया आपने सुना होगा, जेलीफिश, वो भी प्लैंकटन कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो वाटर करंट के साथ ही चलेगा। तो जनरली जो एक डेफिनेशन है वो ड्रिफ्टर्स है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने ये अभी देखा हाउ टू कल्चर, अब देखेंगे हाउ टू कलेक्ट जू प्लैंकटन्स। आप लोग इकोलॉजी में दिखाते हैं ना? हाँ, यहाँ पे आज आना पड़ेगा आपको। जी, यहाँ से पानी लाइए। ये हमारे सारे पुराने कल्चर थे। अब आप इससे देख सकते हैं वहाँ से पानी लाइए। इंसेक्ट आ जाए कल्चर ला रही हूँ, हाँ, तो उनको कैसे ध्यान में रखें? देखिए वो हमें पता लगेगा। अगर हमारे ब्लूम नहीं आ रहा है तो उसमें दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपका मीडिया जो प्रॉपर नहीं बना है, या आपने जो कल्चर लाया स्टार्टर कल्चर आपका सही नहीं है। आप आइए एक बार देखिए ब्लूम कैसा होता है, वो आपको पता लगेगा। हाँ, वही जो है वो जू प्लैंकटन है, मूवमेंट दिखेगा, जू प्लैंकटन। हाँ, पानी में हिल रहे हैं जो। So like what is the maximum number of days that you keep and you finally discard the whole thing, or you don't discard it at all? No, we discard it every 4 to 5 months. Okay. And then you start all of it. Oh yes. आप वाटर कहाँ से लाते हो सर इसके लिए? वाटर या टैप वाटर यूज़ करते हैं नॉर्मल। नहीं, जू प्लैंकटन लाने के लिए वाटर कहाँ से लाते हो? पॉन्ड वाटर कहते हैं। अच्छा, कल्चर कहाँ से लाते हैं? कल्चर हमने मेनली जमुना से लाया है। जो हमारा यहाँ पे कल्चर जितना मेंटेन है वो हमने जमुना से लाया है। इवन आपने यहाँ पे पास में एक मॉडल टाउन में नैन्सी लेक करके है, वहाँ पे भी अगर आप करके कलेक्ट करोगे वहाँ पे भी जू प्लैंकटन, इवन कितना भी कोई भी बॉइल्ड पॉन्ड रहेगा उसमें रहता है, कल्चर रहता है जू प्लैंकटन का, ठीक है। तो ये आपने ब्लूम देखा, आपको दिखा, देखिए वो अलग है। अब देखिए इसमें आपको बहुत सारी वैरायटी दिखेगी। आफ्टर 7 days, yes. after the growth. After the growth. It will take minimum 7 days for their growth. ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट कैसे करेंगे? हमारे पास ऑर्गेनिज्म का आप देखे होंगे तो आपको ऑर्गेनिज्म का साइज अलग दिखेगा, ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट अलग दिखेगी, ठीक है। तो मोस्टली जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो हम 4 प्लैंकटन, इसको सीविंग नेट कहते हैं, प्लैंकटन नेट कहते हैं। 4 साइजेस के हम यूज़ करते हैं। जो सबसे हमारा पहला प्लैंकटन नेट रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा, ये 1000 माइक्रोन का रहेगा। 1000 माइक्रोन में मैक्सिमम आपका डेब्रिस जो भी आएगा, डेब्रिस बड़ा रहेगा तो 1000 माइक्रोन में फंसेगा वो, ठीक है। 1000 माइक्रोन में कलेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको सिंपली डिस्कार्ड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो सीविंग नेट है वो हमारा है 500 माइक्रॉन्स का। 500 माइक्रॉन्स में आपका मोस्ट ऑफ द डेफनिया मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो उससे छोटा पोर साइज होता जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो इसके नीचे लगा हुआ है मिडल में, ये है 106 माइक्रॉन्स का। 106 माइक्रॉन्स में आपको मोस्टली मीजोसाइक्लोप्स, आपका सीरोडेफनिया, ये सब स्पीसीज़ मिलती हैं। और बिल्कुल माइन्यूट जो हमारा जो है वो 53 माइक्रॉन्स है। लास्ट जो है हमारा 53 माइक्रॉन्स का है। अगर आपका लार्वी बहुत स्मॉल है, इवन 1 या 2 डेज़ का है, उसको आपको कल्चर देना तो आपको 53 माइक्रॉन्स का ही देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? उसका माउथ साइज़ बहुत कम है, ठीक है। आप अगर 500 माइक्रॉन्स का दे दोगे तो 500 माइक्रॉन्स को तो वो ईट कर नहीं पाएगा। तो आपको कोशिश क्या करनी है, आपको 53 माइक्रॉन्स वाला जो है वही कल्चर देना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ? और इनके भी लार्वा होते हैं ना, नोक्लियाई लार्वा, वो सारे बहुत छोटा होगा। जैसे ब्रेकियोलस है वो भी बहुत छोटा है, तो वो सारे के सारे लास्ट वाले में आ जाएगा। एंड दैट विल बी द बेस्ट फूड फॉर द जस्ट हैश। डिप करके निकालोगे ना? हाँ, डिप करके निकालना है। अब इसका निकालने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक ही टाइम पे 2 बकेट लीजिए, एक बकेट इस साइड डालिए, एक बकेट उस साइड डालिए, कि एक ही टाइम पे आप बकेट डाल के निकालेंगे तो डिस्टर्बेंस बहुत कम होगा, ठीक है। अभी दिखाने के लिए मैं जस्ट एक बकेट यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली हम बकेट को यहाँ पे डिप करेंगे, निकाल के बाहर रख दीजिए।
ठीक है। अब देखिए, जल्दीबाजी में करना होगा तो क्या करेंगे, हम बकेट डायरेक्टली इसमें डालेंगे, लेकिन डायरेक्टली डालोगे तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा, मैंने आपको बोला कि इसका साइज़ जो है वो माइक्रॉन्स में कम होता जा रहा है। अगर आपने पूरा बकेट भरा हुआ डालोगे तो आपका 106 माइक्रॉन्स का जो है ना वो पास नहीं कर पाएगा इतना फास्ट, इसका मूवमेंट इतना फास्ट होगा नहीं, तो वो भर जाएगा। भरने के बाद क्या, ये बिल्कुल साइड पे देखेंगे तो यहाँ से भी पानी बाहर आने लग जाएगा। पानी बाहर आ रहा है मतलब आपका जूप्लैंक्टन भी बाहर गिर रहा है, तो आपको कलेक्ट हो नहीं पाएगा। तो कोशिश क्या करनी है कि आप एक मग लीजिए, मग से हल्का हल्का डालिए, एक मग भर के धीरे धीरे डालिए कि मूवमेंट होता रहे, पानी जो है वो नीचे जाता रहे। नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट ओवरफ्लो ना हो, इसलिए हम डाल बकेट से डालेंगे ना, बकेट से डालोगे तो ओवरफ्लो होगा। उसके साथ वो जो प्लांटन भी निकल जाएगा। ये सारे जो प्लांटन माइक्रोस्कोप में दिखेंगे ना कि माइक्रोन साइज है। तो ऑल दिस आफ्टर द आइसोलेशन विल सी इन द माइक्रोस्कोप। हाँ, उसका वाटर डाल दीजिए, वो जल्दी हो जाएगा माइक्रोस्कोप का। वो प्लांट वो डालने बाकी इसमें तो टाइम नहीं चाहिए, तो बस आपको पोर साइज़ कम है, आप इसको हिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको बेस्ट ये देखना है कि आपका पानी बाहर साइड से बाहर ना निकले, पास आउट होता रहे आपके नेट से। जैसे हम लोग बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराते हैं, सॉइल वाला कराया होगा, तो सॉइल में भी हम डिफरेंट डिफरेंट सीड लगाते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी तो हमने यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अलग अलग नेट पे हमने यूज़ कर लिया। अब इसको देखेंगे तो मोस्टली इसमें आपको कोई इतना ज़्यादा जूप्लैंक्टन दिखेगा नहीं, ठीक है। अब इसको मैं मैक्सिमम डिस्कार्ड रहेगा, इसको आप जो है बाहर छोड़ देंगे। अब जैसे आप इसका नेक्स्ट वाला निकालोगे तो इसमें देखोगे तो आपको जूप्लैंक्टन दिखेंगे। देखिए आप लोग देखिए, ठीक है, जहाँ पे आपको जूप्लैंक्टन दिखेंगे। अब देखिए, दो चीज़ है, आप इसको डायरेक्टली जो है फिश को दे दीजिए, लेकिन क्या देना सही रहेगा बताइए? देना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि कंटेमिनेशन है, प्लस जो हम जहाँ पे कल्चर कर रहे हैं वहाँ पे क्या है, हमारा ऑर्गेनिक मीडिया है, गोबर है, काऊ डंगर हमने डाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमोनिया है। अगर डायरेक्टली हम इसको फिश को फीड करा देंगे तो क्या फिश में अमोनिया लेवल बढ़ेगा, तो फिश के लिए टॉक्सिक है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे, काफ़ी कम से कम 3 बार इसको वॉश कीजिए। वॉश करने का तरीका क्या है, सिंपली मग दीजिए, हम जो है वही वाटर यूज़ करेंगे जो हमारे फ़िश कल्चर में है, ठीक है, डिआयोनाइज्ड वाटर ही हमने लिया है। सिंपली इसको लेके उसी वाटर में जो वॉश कर दीजिए। वाटर में आ जाएगा सारा। हाँ, तो वाटर में फिर करना है, तो दैट अच्छे से वॉश हो जाए ना, बार बार इसको रिपीट करें। ये देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है उसमें भी देखेंगे, इसमें भी कल्चर है, इसको भी वॉश कर लेंगे। हाँ हाँ, पार्टिकल्स दिख रहे हैं, डॉट लाइन, फाइन सॉइल लाइक पार्टिकल्स। क्योंकि इनका पॉलीकल्चर है। क्योंकि हमारा पॉलीकल्चर, हम इसमें वो नहीं है। अगर आपको फ़िश के हिसाब से देना है तो आपको अलग अलग देना है। अभी आप इसमें देखोगे तो आप इसमें आपको कल्चर दिखेगा, आपका जूप्लैंक्टन दिखेगा, लेकिन प्लस आपको कुछ और भी दिखेगा। और क्या है, डेब्रिस है इसमें, ठीक है। तो ये डेब्रिस को निकालना पड़ेगा, डेब्रिस दे नहीं सकते क्योंकि डेब्रिस में मोस्टली क्या है, अमोनिया है, अमोनिया को हटाना है। तो क्या करना है, थोड़ी देर इसको स्टेबल होने देना है। जैसे स्टेबल हो जाएगा, जूप्लैंक्टन जो मूव करना शुरू हो जाएगा। अभी इतना मूव नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रेस में है, उसको मूवमेंट हो रहा है, स्ट्रेस हो रही है। जैसे आपको उसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दोगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल होने के बाद आपको ऊपर का जो पानी है वो भी फेंकना है। ऊपर में क्या रहेगा, सरफेस फ्लोटिंग डेब्रिस रहेगा, वो फेंक देना है। फिर थोड़ा सा फेंकने के बाद जो नीचे वाला पानी है उसको कलेक्ट कर लेना है। और बिल्कुल लास्ट में जो लास्ट का पानी बचेगा उसमें भी डेब्रिस दिखेगा, वो डेब्रिस क्लियरली आपको दिखेगा, डस्ट दिखेगी। तो उस डस्ट को वापस जो आपको अपने कल्चर मीडिया में डाल देना, क्योंकि उसमें जूप्लैंक्टन रहेगा लेकिन प्लस डस्ट रहेगी, तो आप उसको डाल दोगे वापस कल्चर मीडिया में। haven't taken from the 53 microns, ना? ना अभी तक नहीं लिया है, अच्छा, अभी so लेंगे। this will go for the larger larvae. Bucket में दिख रहे हैं? जी जी मैम, आइए, आप आ गए।
अच्छा सर, तो हाउ विल आई नो कि जैसे मैंने इनोकुलेट किया तो मतलब ऐसे पानी को देख के कैसे पता चलेगा इसमें जू प्लैंकटन, बस ऐसे ही देख के जो मूवमेंट है हाँ, जू प्लैंकटन आपको दिखेगा, वही दिखेगा। उससे जो दिखने लग जाए दैट इज वो, और कितना ज़्यादा मुझे दिखना मतलब आप चाहिए? 100% ब्लूम किसे श्योर कहते नहीं हो आप? रहोगे। जी, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया था कि बहुत ज़्यादा डेंस कल्चर दिख रहा है, ठीक है ना। अगर नॉर्मल दिखे, जैसे अगर इसमें देखोगे तो इतना नहीं, और किसी के टैंक में देखोगे इतना है नहीं, लेकिन जब जैसे आपको डेंस कल्चर दिख रहा है तो डेंस कल्चर पे आपको पता है कि अभी ब्लूम है। अगर उस टाइम पे आप उसको हार्वेस्ट नहीं भी करोगे तो वो डाई ही करेगा, बहुत ज़्यादा डेंस पे रह नहीं पाएगा, उसमें तब भी स्ट्रेस है। जो ऊपर का पानी वो डिस्कार्ड करना डिस्कार्ड क्योंकि आपको देखो सरफेस फ्लोटिंग दिख रहा है डेब्रिस यहाँ पे, इसको डिस्कार्ड कर नीचे का दीजिए। रखेंगे, नीचे का भी बिल्कुल, जो नीचे का है वो भी फेंकना है। फेंकना मतलब वापस इसमें डालना है। ऊपर का भी इसी में डालना हाँ, है। ऊपर का भी इसी में डालना है। क्या अगर इसमें, हाँ, मिडिल वाला हम लेंगे। मिडिल वाला जो है लेना है। अभी आपको मैं कलेक्ट करके भी दिखा दूंगा। से पास कर दे तो हाँ, उसी से सीव करना है बिल्कुल। अभी रिपीट कर लें 3 टाइम्स वॉश। हमारे हाथ में से जो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है, ये टॉक्सिक नहीं है। नथिंग केमिकल इज नॉट। ठीक है, आपको अभी देखो, ये अगर इसको अभी हमारे पेट में चले जाए तो सेफ है। हाँ, फिश इवन भी तो खाते हैं लोग। नहीं तो इसको भी खाते हैं, इसको खाते हैं। बहुत सारे कंट्री जू गलती से प्लैंकटन टमी में चला जाए इट्स सेफ। सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली ईट करते हैं। इम्यून सिस्टम ना, हाँ, यू शुड वॉश योर हैंड्स इसको- थॉरली। डेंजरस है। बट हाँ ये है कि इसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो ले भी गए हैं। बट जू प्लैंकटन को आपको क्या करना है, इसको कंसंट्रेट करना है। मैंने कहा ऊपर वाला पानी जो है फेंक दीजिए, वापस अपने कल्चर मीडिया में डाल देंगे, फिर नीचे वाला लेंगे, और बिल्कुल लास्ट में जो आपको डेब्रिस सा दिख रहा है उसको वापस डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना ऊपर से, ये जू प्लैंकटन दिख रहा है। अभी इसमें मूवमेंट भी दिखेगा आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है तो मूवमेंट भी रहेगा। इसको कैमरा में दिखा दो, कैमरा में थोड़ा मूवमेंट। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक बार वॉश हो गया, हम दोबारा से वॉश करेंगे। ये तब तक वॉश करते रहेंगे जब तक हमें लगे कि एकदम क्लियर आ जाए। जनरली हमें 3 टाइम्स 3 टाइम्स जो है वॉश करना है कि हमारी फिश के लिए कुछ भी टॉक्सिक ना जाए, सिर्फ जू प्लैंकटन जाए। तो आप ऐसा एक बार में कितने जू प्लैंकटन आ जाते हैं, मतलब कितनी फीट के लिए आ जाते हैं? डिपेंड करता है आपके कल्चर पे। कितना जैसे ये तो काफ़ी डेंस कल्चर है, हाँ। तो इसमें कितने आ जाते हैं? तो आप देखिए, एक हम टाइम की फीड बना लेते हैं हम फिश की, या फिर हम फीड ऐसा, इसका फीड बनाना नहीं है आपको। हम जैसे हमने वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद सिंपली इसको आपने ऐसे करके डायरेक्ट फिश में डालना है। इसको कंसंट्रेट कर लो, कंसंट्रेट हो जाए, इवन आपको इतना पता लगे। कैसे करते हैं? अभी कंसंट्रेट करा, कम पानी हो गया, अभी देखेंगे आप इसको ज़्यादा, पहले जितना दिख रहा था उससे ज़्यादा कंसंट्रेट दिखने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको 3 बार करना है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर कंसंट्रेट। वो बीच का आपने इकट्ठा कर लिया जो बीच का लेना था? नहीं, हाँ, बीच का लिया है, इसी में लिया है वो। हाँ, अब इसमें अगर आप देखोगे, इसमें आपको ब्लैक कलर का कुछ ऑर्गेनिज्म दिखेगा। अगर देखेंगे बहुत अलग सा दिख रहा है वो, और बहुत फास्ट भी है। बड़ा भी कुछ ऑर्गेनिज्म आपको ऑरेंज कलर के, थोड़े डार्क पिंक कलर के दिख रहे हैं, और एक बिल्कुल डार्क ब्लैक डार्क है। सेल दिखता होगा उसके। ठीक है, फास्ट चल रहा है। ये जो है, ये हमारे पास साइप्रस है, जू प्लैंकटन है ये भी, लेकिन ये टॉक्सिक है। टॉक्सिक कैसे है? ऐसे नहीं है, कुछ केमिकली टॉक्सिक नहीं है। टॉक्सिक ऐसे है कि इसका सेल वाल जो है बहुत हार्ड रहती है, फिश इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके कल्चर में से साइप्रस जितना हो उतना कम हो। ठीक है, अगर आपको इसमें साइप्रस दिख भी रहा है, आप ड्रॉपर की हेल्प से इसको बाहर कर लीजिए, ताकि आपके साइप्रस, अगर साइप्रस फिश डाइजेस्ट कर नहीं पाएगी, अगर ईट करती भी है तो वैसा वैसा कर बाहर आ जाएगा। रिमूव कैसे करेंगे? इसको ड्रॉपर की हेल्प से। ये तो बहुत मुश्किल है, इतने सारे। नहीं, इतना नहीं आएगा। अगर आप कल्चर मेंटेन करेंगे तो इतना नहीं आएगा। आपको निकालने का वे देखना है। जो मोस्टली साइप्रस रहता है वो वाल पे रहता है, वाल पे चिपका रहेगा। और जनरली जो सीव के साइज के अकॉर्डिंग वो हम नहीं लेते। हाँ। अगर मैक्सिमम जिसमें आ रहा है वो हम लेंगे Dropper is ही the नहीं, वो only वाली method size। through which you can separate the cypress, like the dropper. ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आप दोबारा जो है दोबारा से फिल्टर लगाइए, फिल्टर लगाइए, क्योंकि साइप्रस का साइज जो है वो मोस्टली बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो आप दोबारा फिल्टर लगाएंगे, साइप्रस ऊपर आ जाएगा। ये तो नहीं है कि 100% रिमूव करना है, थोड़ा बहुत रह जाए। हाँ, थोड़ा बहुत रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा अगर आपका, जैसा आप मान लो अगर 100 जू प्लैंकटन खिला रहे हो, उसमें 50 आपका साइप्रस ही है, तो वो तो प्रॉब्लम है। उसको कोशिश करिए जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम कीजिए। बड़े तो फिश सर को मैं दे ये सकते हो पूछ आप। के आप कितना एक जैसे नॉर्मल साइज के फिश One को day लिए fish, कितना 2 day जू fish को। प्लैंकटन हमें देखिए, कितना हम लगता है? हम जो है एक जैसे हमारा पास ये 1 लीटर का है,
तो जैसे हमारे पास एक्वेरियम है, एक्वेरियम अगर 100 लीटर का है तो हम कोशिश करते हैं कि हाफ मग जो है, इवन मतलब हमारा मतलब 5 ml जो है, सॉरी 500 ml जो है वो हमारा एक पर टैंक में जाए, 500, लेकिन कंसनट्रेटेड। उसमें क्या रहेगा, हमारा मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जाएंगे। मैक्रोफाइट्स, तो मैक्रोफाइट्स आपने देख लिया, आइडेंटिफिकेशन हो गई ऊपर। अब हम देखेंगे कल्चर कैसे करते हैं उसको, ठीक है। तो कल्चर के लिए भी सेम हम यही ऑर्गेनिक मीडिया यूज़ कर रहे हैं, यही हमारा मीडिया रहने वाला है। तीनों कंपोनेंट रहेंगे हमारा, मस्टर्ड ऑयल केक, पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स और काऊ डंग रहेगा। लेकिन इसका रेशो सेम होगा, लेकिन इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। हमने इसमें दिया था 0.5 to 6 दिया था, ठीक है। वहाँ जो देंगे हम 1.054 kg पर मीट्रिक क्यूब 1.0 मैक्रोफाइट कल्चर, 1.054 kg पर मीट्रिक क्यूब, हाँ, पर 1000 लीटर या पर मीट्रिक क्यूब, ओके। ठीक है। उसके हिसाब से हम इसको, मैक्रोफाइट्स ये आपके मैनुअल में लिखा हुआ है, आपके मैनुअल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैक्रोफाइट्स कल्चर, One more session is left. ओके। तो मैक्रोफाइट्स कल्चर के लिए क्या करना है, 1.054 kg पर मीट्रिक क्यूब लेना है, सेम कैलकुलेशन करनी है। लेकिन इसके लिए हमने डिकम्पोज होने के लिए कितने दिन रखा था, 10 डेज। उसको जो आपने 5 डेज में इनोकुलम कर देना है, हाँ। डिकम्पोजिशन सिर्फ 5 डेज पे। बेसिकली क्या है, हमारा नाइट्रोजन साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। प्लांट्स को क्या चाहिए, नाइट्रेट चाहिए, उसका मेटाबॉलिज्म के लिए नाइट्रेट चाहिए। तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं बैक्टीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे हम देखेंगे नाइट्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी 1:1:1 1:1 सेम, वही 23 नहीं, इसको कैलकुलेट करोगे तो फार्मूला अलग है, 1.054 है। ये लगभग आपका 300 ग्राम के पास, 300 के आसपास आएगा। 300 हाँ, तो ये आपका अमोनिया है, तो अमोनिया विल बी, लेकिन ये देखिए फिर एक चीज़ फिर से है, आपको फिर से देखना है आपका वाटर कंटेंट कितना है। वाटर कंटेंट के हिसाब से, ये हमने 130 लीटर लिया है, उसमें आपने देखना वाटर कंटेंट कितना ले रहे हैं। 30 के हिसाब से कितना वाटर कंटेंट, 30 300 के, हाँ, 130 के हिसाब से लेंगे तो उतना आएगा। हाँ, 138 लीटर हम मेंटेन करेंगे तो 370 पोल्ट्री, 370 पोल्ट्री, 370 मस्टर्ड ऑयल केक, और हमारा उसका इंटू 10 कर देंगे हमारा काउडंग, ठीक है। 37 370 for 138 liter, 90% इसमें मॉइस्चर होता हाँ, for 138 लीटर टैंक। यस, 37 और 370, ठीक है। उसके बाद आपने क्या कर लिया, 5 डेज पे हमने इसको इनोकुलम कर लेंगे। अब इनोकुलम करने के लिए इसका फिक्स अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बोला था कि आप 1 ml 2 ml अपना स्टार्टर कल्चर लाइए और डाल दीजिए। उसमें क्या करना है आपको, 15 ग्राम प्लांट वे करना है, जो हमारा मैक्रोफाइट्स रहेगा 15 ग्राम इनोकुलम करना है, जो हमारे टैंक के हिसाब से। हमारे पास मैंने कितना बोला, 130 लीटर, इवन 130 लीटर काउंट कीजिए या हाइट ऑफ वाटर देख लीजिए। जैसे हम लोग करते हैं, हम क्या करते हैं, हम 25 to 30 सेंटीमीटर मेंटेन करते हैं वाटर की हाइट, ठीक है। उसमें डाल देंगे इस फार्मूले के हिसाब से हमारा 37 370 5 डेज़ के लिए डिकम्पोज होगा। 5 डेज़ के बाद 15 ग्राम प्लांट जो है उसमें इनोकुलम करेंगे। 15 ग्राम डालने के बाद 10 डेज़ के बाद उसमें ब्लूम आएगा। क्या दिखेगा, आप कैसे देखोगे कि आपका कल्चर मेंटेन हुआ है। आप जैसे कल्चर डालोगे तो 15 ग्राम बहुत कम सा होगा, थोड़ा दिखेगा, लेकिन 10 डेज़ के बाद आपका पूरा सरफेस वाटर का जो होगा कवर हो चुका होगा, ठीक है। जैसे हम वहाँ देखेंगे, यहाँ जाइए, देखिए ये हमारा कल्चर है यहाँ पे, हो गया चाय के लिए। हाँ बस 5 मिनट, 5 मिनट में चल रहे हैं। आइए उनको बुला लीजिए, लेमना माइनर। आइए मैम, एक साइड यहाँ पे आ जाइए। उसके दिन को हार्वेस्ट कैसे करेंगे, फिर ड्राई करेंगे वहाँ ओवन में, फीड कैसे बनाएंगे वहाँ बता देंगे। हाँ जी, सारा कुछ करोगे। नहीं वो बस हो गया, 1-5 मिनट का सारा ओवरव्यू। ठीक है, कितना हो जाए उतना अच्छा है। यहीं से देख लीजिए। लास्ट वाला अभी हमने ये देखा था,
हार्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हार्वेस्ट कैसे करना है, सिंपली आपको सीव करना है। यहाँ से आप किसी नेट की मदद से कर सकते हैं, आप हाथ से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, इसको ऐसे करके लेंगे, डायरेक्टली हम अपना बकेट में डालेंगे और बकेट में इसको वॉश करेंगे प्रॉपरली। इसको 3 टाइम्स जो है हम वाटर से वॉश करेंगे, जो हमारा टैप वाटर रहेगा, और फाइनली जो है हम इसको डिस्टिल्ड वाटर या एमक्यू वाटर उससे वॉश करेंगे। ठीक है, डिस्टिल वाटर नहीं तो एमक्यू वाटर, मिल्की वाटर, मिली मिल्की वाटर। This is dark, the black are those fungi. Which one? ये डार्क There's some black. This one. ये जो ब्लैक नीचे जो दिख रहा है ना, रूट्स हैं वो। ये रूट्स हैं इसके। यस, सुंदर लग रहा है इसके ऊपर black dot नहीं ऐसा नहीं है, ये ऊपर से कुछ गिर रहा है, ड्रॉपिंग्स हो रहा है। ये वाला हाँ, ये ऊपर से आम का पेड़ है उससे गिर रहा है। ओके आप इसको ऐसे खुला कितनी देर रखते हो इसमें, जिससे कि इंसेक्ट ब्रीड ना करे, कवर नहीं रखनी चाहिए? हम इसको फिल्टर करते रहते हैं। हमारे पास छन्नी है, छन्नी से इसको हटा के अगर हमारे पास कुछ है दिखता है, हमें मॉस्किटो का लार्वा दिखता है, कुछ दिखता है, उसको हम यहाँ से करके बाहर निकाल देंगे छन्नी से। ठीक है, इतना हो गया हमारा। हमने हार्वेस्ट कर लिया, वॉश कर लिया। वॉश करने पे क्या करना है, हमने 3 टाइम्स जो है टैप वाटर से, और फाइनली जो है हमें किससे करना है, डियोनास वाटर या एमक्यू वाटर से। ठीक है, वॉश करने के बाद अब हम इसको ड्राई करेंगे, लेकिन ड्राई जो है वो डायरेक्टली सनलाइट में ड्राई नहीं करना है, इसको शेड ड्राई करना है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली सन ड्राई करोगे तो इसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको शेड ड्राई करेंगे। शेड ड्राई करने में 1-2 दिन में जो है ड्राई हो जाएगा। फाइनली जो ड्राई होने के बाद इसको फाइनली जो है आप ड्रायर में रखोगे एट 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस 3 आवर्स के लिए रखोगे तो फाइनली आपका जो प्लांट होगा वो ड्राई हो चुका होगा। ठीक है संजय जी, ड्राई वाला प्लांट ले आना अंदर से। फिश उधर उसमें रखा है, फ्रिज में ड्राई प्लांट रखा है। तो हाँ ठीक है, फाइनली हमने ड्राई कर लिया। ड्राई होने के बाद उसको हम जो है मिक्सर की मदद से, मिक्सर की हेल्प से पाउडर बना लेंगे, और फाइनली वही पाउडर जो है हम अपने फीड जो है, फिश के लिए फीड जो है उसको फिश फीड इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ करेंगे। गोल सी बनाते हैं, गोल वैसा नहीं बनाने की जरूरत। हम हाँ पैलेट्स बनाएंगे, उसके पैलेट्स बनाएंगे, वो अलग आप सीखेंगे भी वो फीड कैसे बनता है। कैसे बनाया, फिल्टर करके ड्राई किया है? हाँ, इसको वॉश करा, वॉश ड्राई नहीं डायरेक्टली, देखिए वो लाइव फीड ऑर्गेनिज्म है, वो लाइव फीड है, ये आर्टिफिशियल है। लाइव फीड मतलब उसको ड्राई नहीं करना है, उसको डायरेक्टली हम डाल देंगे फिश में। ठीक है, ये आर्टिफिशियल बनाने के लिए इसको ड्राई करेंगे। हाँ ये देखिए जैसे ये है, ये हमने कर रखा है, ये ड्राई कर रखा है, ये फाइनली ड्राई है हमारा। ठीक है, और ये हमने पाउडर बना रखा है। ठीक है, ये ड्राई है और ये हमने पाउडर बना रखा है। फाइनली ये पाउडर फॉर्म जो है ये हम यूज़ करेंगे अपने फिश फीड में। ठीक है, कितना परसेंट करना है वो फाइनली बाद में देखेंगे वो वाला, लेकिन अभी तक कितना है। नहीं, वी आर एबल टू सस्टेन इट। Okay. Have you like I mean, if somebody has to sell it, ये वाला जो dry वाला, what is the cost like? कॉस्ट इतना नहीं है, क्योंकि जो भी आप न्यूट्रिएंट यूज़ कर रहे हैं वो मोस्टली आपका वेस्ट है। Okay. But this can also be a way of an alternative means of Yes. income. Yes. Actually, हम लोग you can buy this from the market also, but we are culturing because this is the pure one, disease free. यदि हम फिश को सिर्फ ये दें, जूओ प्लैंकटन ना दें, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे नहीं। इसमें देखिए हम हमारे फिश फीड के लिए क्या चाहिए, एक न्यूट्रिएंट बैलेंस चाहिए, आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब चाहिए। अब प्रोटीन अगर आप इसमें देखेंगे, जैसे हमारा लेमना माइनर है उसमें हमको 36% प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन फिश के लिए 36% जो है इतना एबल है नहीं, सफिशिएंट है नहीं। तो जैसे हम फिश मील यूज़ करते हैं, डायरेक्टली फिश ड्राई फिश को खिलाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको 66% प्रोटीन मिलेगा, तो उसके लिए फ़िश तो अच्छा ग्रो करेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ यही प्लांट खिलाओगे, पहली बात तो ये इसका टेस्ट अलग आएगा। ठीक है, फ़िश को इतना अच्छा लगेगा नहीं। तो आप क्या करोगे, इसको फ़िश मील के साथ एडजस्ट करोगे, एक रेशो रखोगे 10%, 20%, 30%, और यही हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कितना परसेंट हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कितना परसेंट ऐड करने पे हमारा बेस्ट रिजल्ट मिलता है, बेस्ट ग्रोथ मिलता है। For example, कैसे कंक्लूड करते हो कि फिश इज हैप्पी?
उसकी मूवमेंट से खाने पे खाने पे खाएगी तो खुश हाँ नहीं खाएगी आप उसका ग्रोथ पैरामीटर्स खाने पे अगर हमने जैसे फीड जो है वे करके डालेंगे, एक टैंक में हमने 5 ग्राम डाल दिया फीड, ठीक है, आधे घंटे में देखेंगे अगर फीड, क्योंकि वापस इसको हम जो है साइफन करेंगे, साइफन करने के बाद ड्राई करेंगे, उस फीड का वे करेंगे, अगर वो 5 ग्राम का 2 ग्राम 1 ग्राम इतना बच रहा है तो मतलब फ़िश खा रही है। लेकिन मान लो 5 ग्राम का 4 ग्राम बच रहा है तो फ़िश खा ही नहीं रही, तो फ़िश एक्सेप्ट कर नहीं पाई। फिश का कलर भी देख लेते हैं, मतलब ओवरऑल बहुत सारा फॉर एग्जांपल अगर बेबी को मिल्क दे रहे हैं तो हम लोग तो सिर्फ मिल्क से नहीं हो सकता है ना, तो हमें तो मिल्क भी चाहिए, साथ साथ में खाना भी चाहिए, चावल चाहिए, तो वैसे ही फिश के साथ भी है। तो जू प्लैंकटन इज द मिल्क। डिफरेंट तरह के प्लांट्स मिक्स करते हो फीड के साथ, ये सब Baby का milk। कॉम्बिनेशन देखिए मैम, कॉकटेल भी बनाते हो। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपेरिमेंट पर, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। नहीं हमने वो भी करा है, वो भी एक्सपेरिमेंट करा है, हमने अलग अलग मैक्रोफाइट्स को मिक्स करा है, जैसे स्पाइरोडिला है, सैल्विनिया है हमारा। थोड़ा मिनरल कंटेंट भी अलग होगा। हाँ अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, हर एक की न्यूट्रिशनल क्वालिटी अलग है। मैडम ऐसा ICPMS हमने किया हुआ है, ग्लोबली फर्स्ट टाइम हमने अराउंड 56 एलिमेंट रिपोर्ट किए सारे मैक्रोफाइट्स से, इनका अमीनो एसिड प्रोफाइल, फैटी एसिड प्रोफाइल, विटामिन्स, एलिमेंट्स सारा कुछ किया। नहीं मैं ये पूछ रही थी, इनको फिश को खिला के भी देखा है हमने। हाँ खिला के देखा And when you पेपर start पब्लिश है feeding the fish larvae, like after how many days you decide कि this can be fed? At fingerling size, fingerling That size. would be like how many? It depends on different species of the fish. No, when it is in fingerling size पे, मतलब इतना? हाँ fingerling fries size पे। So there is no need to count the days, and you just look at the size. Yes we can. आपने पब्लिश किया हुआ है ये सब प्रोटोकॉल? वी कैन स्टार्ट आर्टिकल नवाज ना आपने पब्लिश किया हुआ है प्रोटोकॉल ये सारा? हाँ ये सारा आप हमारे रेफरेंस दे लैब से देना हमें, publish- रेफरेंस दे देना हमें। हाँ हमारे लैब से। स्पीसीज टू स्पीसीज ठीक है, तो देयर लाइफ साइकिल है ना फिश का, तो सबसे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से समझाया आपने। फ्राई देन फिंगर देन